set. The platform is provided to all the young cricketers here in Faisalabad to showcase their talent and step up in their cricketing. Lots of superstars included here in Faisalabad for Bank Alpha and T20 Cup. It's a beautiful venue and what a month to have this tournament. Bank Alpha presents Inveric Solar Energy T20 Cup. Coming to you live from Iqbal Stadium, Faisalabad. This is day number 1. And it's the big one, the defending champions Karachi Whites taking on Islamabad. Yeah, it's a tournament where 18 teams will participate from 16 regions. This is how it is planned up. Group stage from 14th to 21 March, and then the quarterfinals, semi-finals, and the final to conclude on 27th March. Yeah, let's have a look how these matches will be played. 14th March, well, this is today. Karachi Whites will take on Islamabad region. It's a double header. Bahawalpur region and Dera Murad Jamali will take on after this game at 11 p.m. and all these teams playing in this, and there are games playing at Gaddafi Stadium and other venues also. 270 players, 4 venues. It's a big, massive tournament as far as region cricket is concerned. This is the first game. Islamabad team all very pumped up. Lots of good players. It's an opportunity for these youngsters to come and showcase their talent. Shamil Hussain from under 19 looks good. Right, let's have a look at the squad from Islamabad region. Mohammad Musa, well, the star says that he's played for Pakistan. Rohil Nazir also. Sarmad Bhatti, very talented. Shamil Hussain, Hamad Siddiqui, and all other talented players from Islamabad region. But Islamabad region are up against very experienced defending champions, Karachi Whites. Sohail Khan, the veteran. Lots of young talented players. Taha also in that side, well led by Saud, Shakeel the captain. Saud Beg also in that side. It's a huge opportunity for these youngsters to play along some big names. Lots of stars you can see on the left side. Saud Shakeel, Khurram Manzoor, Shan Masood, Danish Aziz, Sohail Khan, Mir Hamza. They've all represented Pakistan at international level, and there are lots of them to play again. Well, we caught up with Shan Masood early on. Let's hear from him what he thinks about this tournament and his preparation for it. Shan, looking very fit, very nice. कैसे हैं? कैसा चल रहा है रमज़ान? ट्रेनिंग में कोई चेंज आई या वैसे ही चल रहा है? नहीं, ट्रेनिंग नहीं रुक सकती. ऑब्वियसली रूटीन्स थोड़ी चेंज हुई हैं. दिन रात बन जाता है, रात दिन बन जाती है, तो घर वालों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है. बट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर दिस इज़ द टाइम. थोड़ा सा ऑफ सीज़न था इन टर्म्स ऑफ कि जब 4 डे ख़त्म हुआ, बीच में ब्रेक आया, और अब दिस विल ऑब्वियसली लीड इनटू द PSL. तो एक छोटा सा वक्त मिला, छोटी सी विंडो मिली अपने आप पे थोड़ा काम करने का. 2 साल के बाद आपकी नेशनल T20 में वापसी हुई है, तो कैसी लग रही है ट्रांजिशन टेस्ट क्रिकेट टू T20 क्रिकेट? हमेशा अच्छी लगी है. आई थिंक कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं जब सीज़न के दौरान ही वो शिफ्ट्स आए हैं. मुझे अभी तक याद है एक सीज़न में खेला था इस्लामाबाद के लिए, तो उसमें 4 डे कंपटीशन को बीच में ब्रेक किया था. नेशनल T20 आया था, फिर 4 डे में गए थे. तो एज मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर ये चीज़ें बहुत एक्साइटिंग होती हैं. आपको टाइम मिलता है कि आप अपने आप को डिफरेंट गेयर्स में टेस्ट करते हो. डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि 2 साल बाद ऑब्वियसली ये खेलना बहुत अच्छा लगता है टूर्नामेंट. और इसकी देखें सबसे बड़ी खूबी जो मुझे पर्सनली लग रही है, 18 टीमें पाकिस्तान के एक कोने से हर टीम आई है, तो सारा टैलेंट सामने आएगा और एक बहुत अच्छा कंपटीशन मिलेगा हमारी क्रिकेट को. बीइंग द टेस्ट कैप्टन और सीनियर मेंबर हैं, काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं आप, अब कैसा देख रहे हैं कि एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप देखते हैं कि यंगस्टर्स आपके साथ खेल रहे हैं, आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं? देखें रोल्स चेंज होते हैं. ये क्रिकेट की साइकिल है, ज़िंदगी की साइकिल है कि आप शुरू खुद एज ए यंगस्टर करते हैं और आप थ्रू द स्टेजेस जाते हैं.
फॉर्चुनेटली इनफ काफ़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिकली, और अब बस रोल्स चेंज होते हैं। अब रोल्स ये हैं कि थोड़ा सा एक सीनियर फिगर हूँ, कराची की टीम में आया हूँ कराची के लिए। आई थिंक मैं पहली बार नेशनल T20 खेल रहा हूँ, तो आई थिंक काफ़ी बड़ी मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है कि अपने शहर के लिए खेल रहा हूँ। काफ़ी यंग टैलेंट है, और मैं और सऊद यही चाहेंगे कि इस टीम को काफ़ी आगे पहुँचाएं। चलिए, all the best, Shan, and looking forward to see you play. थैंक यू। Welcome to the opening game of Bank Al-Falah presents Inverix Solar Energy National T20, and we are starting here in Lalpur. That's Islamabad, Iqbal Stadium, and we have our opening match. That's Karachi Whites versus Islamabad. We've got the two captains here. Leading Islamabad, we got Raheel Nazir. So Shakeel is leading Karachi Whites, and our famous match referee, Mr. Naqvi. Who's got the coin? So Head. Heads is a call. Tails. सऊद टॉस जीते हैं, यानी कराची वाइट्स टॉस जीता है। सऊद से बात करें। सऊद, सबसे पहले तो इसको देख के सरफेस को क्या फैसला है करने का? पहले हम लोग पहले बैटिंग करने का फैसला किया सर्विस को देख के। आइडिया नहीं है फर्स्ट गेम में टूर्नामेंट का किस तरह पिचेस खेलती हैं, लेकिन बजाय लुक से थोड़ा सा स्लो साइड पे लग रहा है। यूजुअली पहला जो मैच होता है, बिल्कुल आपने सही कहा, अंदाजा नहीं होता है, तो किस तरह से फिर फॉर्मेशन करते हैं 11 की? लेकिन देखिए हमारा जो कॉम्बिनेशन एक कोई भी T20 गेम के लिए चाहिए होता है, उसके मुताबिक बिल्कुल सेटल्ड कॉम्बिनेशन है। कोशिश करेंगे कि अच्छी बैटिंग करें और अच्छा टारगेट लगाने की कोशिश करें। स्टार स्टडेड साइड है तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है टीम से, ये एक सर्टेन कैरी करना पड़ता है प्रेशर कप्तान को। जी बिल्कुल, देखें कराची की टीम की हमेशा से एक लेगेसी रही है नेशनल T20 कप में। हम दो के ज़्यादा जीते नहीं है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा फाइनल्स खेले होंगे मेरे ख्याल में, तो उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। साथ हमारे पास यंगस्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है यंगस्टर्स का भी। आपने कॉम्बिनेशन की बात की, सरफेस को देख के ज्यादा क्या बॉलिंग अटैक किस टाइप का आपको दिख रहा है? यहाँ पे सरफेस थोड़ा स्लो है, किस टाइप का दिख रहा है पिच? बज़ाहिर सरफेस को देख के थोड़ा सा स्लो साइड पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पिन भी प्ले में आएगा। एनीथिंग अराउंड 160 170 मेरे ख्याल में अच्छा टारगेट होगा। चलिए, गुड लक टू यू। थैंक्स वेरी मच। रोहेल से बात करते हैं। रोहेल, हैप्पी टू बॉल फर्स्ट? नहीं, पहले हम बैटिंग करना चाहते थे विकेट को देख के रन्स ऑन द बोर्ड, उसके बाद डिफेंड करते, लेकिन टॉस डजंट। 160 माइंड में रखा हुआ है सऊद शकील ने। इतना चेजेबल है इस ग्राउंड में? थोड़ा सा एक साइड पे है ये पिच, एक तरफ 64 है, एक तरफ 76 है। हमारी बैटिंग में डेप्थ है, ऑलराउंडर्स है हमारी टीम में जो नीचे बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी, तो ये है कि डेप्थ है, और इंशाल्लाह जितना भी टारगेट हुआ इंशाल्लाह चेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं that you have a good start in the tournament. Thank you so much. Thank you. Okay, so now we know that Karachi Whites have won the toss. They've decided to bat first. I've got Salman here with me. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सलमान, पहले बैटिंग का फैसला किया है कराची ने टॉस जीत के, एंड आई गेस सऊद फील्स इट्स स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड, बट 160 इज ऑन अवेलेबल। यस, आई मीन अगर आप इसका क्रैक साइज देखें, इसकी जो डिब्बी है बहुत ही छोटी छोटी है, और इसका कलर है इट्स स्ट्रॉ कलर्ड। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स टेल यू कि ये स्लो साइड पे होगी, थोड़ा लो बाउंस होगा, बट आई थिंक 150-60 इस पे होना चाहिए। फिर भी कप्तानों को बड़ा स्मार्टली यहाँ पे शायद सिलेक्शन करना होगा बॉलर्स को, कि एक साइड 64 है और एक साइड 76 है। और इसमें देखिए पहला मैच है, अभी हवा चल रही है, बट वी वुड नो लेटर ऑन कि इसमें ड्यू कितनी आती है, उस पे कितने फैसले होते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 7 और दूसरा मैच लेटर इन द नाइट है। सो आई थिंक फर्स्ट कपल ऑफ डेज देन कैप्टन्स वुड नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू अकॉर्डिंग टू दिस पिच एंड हाउ द स्क्वायर प्लेज। सरफेस को देख के आप सऊद के साथ हैं, 160 तो बनना है। वेल, ऑल्सो नोइंग कि आपकी टीम क्या है। I don't know whether it's a batting heavy team or a bowling heavy team, क्योंकि ये ऐसा पिच नहीं है जिसके ऊपर कोई पहली दूसरी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। So it is more of a team strength, जिसको देखते हुए आप इस पे फैसला करें, अपने आप को देखें, ऑपोजिशन को देखें, and then decide what you are better off with. So here we are. So since it is the first match of the tournament, everyone is a little skeptical कि क्या होगा। तो देखते हैं कि as we proceed into the game, जो फैसला है कराची वाइट्स का पहले बैटिंग करने का सही साबित होता है कि नहीं। Right, the big news coming. It's the Karachi Whites winning the toss and deciding to bat first. That's how their 11 make up. Saud, Shakeel, Khwaja, Nafe, Shan, Masood, Khurram, Manzoor, Saud, Big, Mohammad Taha,
Danish is he? Sohail Khan, look at the stars in that side. Lots of big names. That had Mohammad Umar, the all-round cricketer. So they are the defending champions. Also, a very, very good side. A young Islamabad region, Ali Imran, we all know him. He's a very good all-round cricketer. Shamil Hussain from under 19. Royal Nazir from under 19 also. Sarmad Bhatti, Arsil Sheikh, Farmanullah Khan, and Mohammad Musa also in that side. But there are young players. We will get to know them as the tournament progresses. This is match number 1. Bank Al-Falah presents Solar Inverix T20 Cup. Khwaja Nafe, very talented, super talented. 616 runs, 24 their average 650s. Strike rate also very impressive, 131. And his partner, we all know him, Saud Shakeel, 990 runs, 450s with strike rate of 131. This is his 50th T20 game, highest of 88. It's a very important inning for him. He would like to make a mark in white ball cricket. Umair Afridi, 12 wickets, economy of 6.38. Right, just moments away to start off National T20. Rashid Riaz, the umpire, just making sure that everything is in order. Right, the first delivery. Middle of the bat, nice. As I welcome along the former captain, Salman Butt, a very good evening. Thank you, Ali. Good evening to yourself and all the viewers as we kick off the National T20 2025. And it's Karachi Whites winning the toss and opting to bat first, and a dot ball to start with. Early days, perhaps gonna have a look at the pitch. This one swing on, and there goes the finger. First blood, this is. Khwaja Nafe, he feels unlucky. But we shall see in the replay. It was a loud appeal, and umpire had no hesitation in giving Nafe out. Big blow. Certainly is a big blow. He's not happy. He's certainly not happy. He thought that he's hit it. He was swinging in the air, but Islamabad will take it. That's a great start. Let's have a look. There is no problem at this end. Salman swung in late. Well, we'll replay, because it seemed as if the batter isn't happy. It feels as if he has edged it pads, and he's disappointed with it. But he has to no choice for DRS. And at the moment, 1 for none, as Islamabad are off to a great start. A very big wicket of Khwaja Nafe as Khurram Manzoor, the experienced campaigner, walks in. Somebody who has been there, done it all for years and years for Karachi. A wonderful player. Look at the record. 3,820 runs. 30 50s, 400s. 119 the strike rate with the best of 109. 38 years of age and still going, still very fit, still very hungry for cricket. But what a good start this is from Islamabad. And you can see the energy is different, the slip is there now. Oh, the angle, it's the angle. The previous one swung in late, and this one just leaving the batter. Manzoor is a seasoned opener, just playing the in-swinger, inside line. Have a look at this again, and yes,
case which can be arguable. The batter was pretty sure that there wouldn't be much wrong, but the umpire thought differently, signaling it out. And first not too much, not coming back a great deal, just played away towards cover point. It's gone a bit chilly, Ali, after a bit of rain on the outskirts of the city. The wind is blowing fast, and that might ensure that there isn't any dew, because this is that time of the year when there can be a lot of dew around. He's hit it hard, and Wait says, Khurram Manzoor and a direct hit. And a direct hit. They're going for the third umpire. We'll have to wait. Rashid Riaz at the moment is not entrusted. Probably he thinks that he's got a good vision. But everything happening. This is a good energy, good start from Islamabad region. Bit of nerves for Karachi Whites. Oh, that's a fantastic start. That is an excellent start from Umair Afridi. A maiden with a big wicket. 9 for 1. Beautiful setting here in Iqbal Stadium, Faisalabad. Had a great time to have this tournament. Ramadan, the blessed month of Ramadan, and all these people will come into the stadium as we see Kaleem Dil, right arm medium. And that's what I said earlier. There will be lots of new young players that will come up in this tournament, and it's an opportunity for them to bowl against somebody like Saud Shakeel. Runs off the bat, in the gap, and good fielding too. Very, very good work done by the fielder. Excellent fielding there in the end, but not great running. Both of them ambling across for a couple, and the intensity has to be different. It's the power play, it's a T20 game, and both the batters have played cricket at the highest level. And first over has been a maiden, a wicket maiden. Probably both the batters expecting the ball to go to the boundary. In the end, it didn't. The outfield is definitely a bit on the slower side. Once again, right areas, and just tap down to the third as Karachi Whites move to 3 for 1. Yeah, you got to feel for somebody like Khwaja Nafi, a youngster, eager to do well, an opportunity being provided. And you get out on the second ball on a dark, and let's have a look how he went out. Well, it's very confusing, very difficult to tell from here. But he certainly thought he's edged it. That's not a good way to start off a tournament. Well, probably just maybe he hasn't had a look at this ball and he didn't know the ball would come in that late. Probably the element of surprise as Khurram tries to swing one really hard. No pace on the ball. The pitch definitely is on the slower side. Not much bounce available as well. So maybe scoring square of the wicket might be difficult for batters. Just have a look at this. This one is the ultra slow mode. This is the time when the ball jacks back, comes in, and still not be very clear whether it was some bat on the ball or not.
deep point in place. Quickly realizing Royal Nazir, the captain, that you got to save those runs early on in the power play. As Salman was suggesting, runs matter, quick runs matter. And one aspect is running between the wickets. I wonder how much Khurram will complement Saud. 38 years old, I tell you, and still very fit, very strong, very hungry to score and perform. A couple of more runs. Yeah, he will come back for the second. Yes, he does. Good running. Khurram Manzoor looking to go big and trying to hit really hard. In the process, he's losing shape. Just have a look at the stroke. The head going up much earlier, and the connection not ideal. Inside edge goes in the gap, gets him couple. But bowler would feel that he's got a chance. 7 for 1 as we approach the end of second over, and there is some sort of disturbance behind the bowling arm. Smashed in the gap and towards the bigger boundary, but still it will have the legs to go and hit the fence for the first boundary as the second over is bowled, and it's 11 for 1. Yeah, very, very experienced Khurram Manzoor. These are the most runs as far as National T20 Cup is concerned. He's right at the top, 3,167 runs with an average of 29. Shoaib Malik also in that list. Umar Amin, Kamran Akmal, Ahmed Shahzad, lots of good players. Lots of superstars of Pakistan cricket, Salman, in that list. Khurram Manzoor still hungry, as I said. And the way he played the last delivery, he's been looking to hit it hard. Very wristy he is, Saud Shakeel. The last delivery of the last over, Khurram Manzoor, he's been looking to hit it hard, but lucky on that occasion, he hit it in the gap. That's what happened. He's been hitting hard into the surface and into the gap also. Yes, short and wide and asking to be hit. The pitch definitely is a bit on the slow side, so lots of time for the batter. He hit it in front of square through covers. A cut stroke going through the covers tells you the pace that is available in the pitch. Once again he goes hard, and this time through mid-on and mid-wicket. Another boundary. So Karachi Whites are now starting to flow. Couple of boundaries to Khurram Manzoor, which will definitely make him feel a lot better, much more confident. And the intent is always there when he's at the crease. Have a look at this. He stations himself very early. And once the ball is in his arc, then he gives it the full Monty. Has he edged it? Has he edged it? No! No, there was a noise, subtle noise. Rashid Riyaz suggesting it's off the pad. Everyone was up on their feet. They were appealing like anything. They were all over him. They all thought that he's nicked it. Yeah, that's a good decision. That's a very good decision. Coming off the back pad. There was certainly the noise that was there. Because they know it. It's such a big wicket, Khurram Manzoor's wicket. Because he's finding the gap also. First over, he was a bit rough.
this can happen to you. Young fast bowler bowling to a veteran, trying different things. Well, definitely he's swinging hard. He's got a couple of boundaries and he's got into the head of the bowler, who is now expecting that Khurram will be after everything that he bowls. So he's looking to just give a few variations, and in doing so tries the back of the hand, which isn't ideal in line or length. In the end, a wide delivery. Once again goes hard, thick outside edge, just fetches him one. Good slow one again. I think the role is defined. It's pretty clear that as long as he stays, he's going to look for those big boundaries, and that's what the approach suggests. He's looking to hit them hard, looking to hit big, and lucky for them, he's found the gap on a couple of occasions, Khurram Manzoor. It's a very, very good side. There are lots of batting still to come. There's very talented Mohammad Taha. There's Danish Aziz. Not to forget Shan, Masood, definitely. On the other hand, you'll find these death touches and the wrist work from Saud Shakeel. He'll keep on doing that and compliment Khurram Manzoor on the other hand. Just get the strike back to him. Yeah, I said it earlier, Salman. It's an important tournament as far as Saud Shakeel's white ball cricket is concerned. He's looking to establish himself in white ball cricket, so this is an opportunity for him to get going. That's good cricket. Change in pace, a cutter into the surface, guided towards third for one. 3 done, 20 for 1. For 1 after 3. It's a very careful start as far as Karachi Whites, the defending champions, remember. Ah, that's smacked. 1 bounce, 2 bounces over the rope. That's Khurram Manzoor. That's how he likes playing. That's the role that has been given to him. It's brilliant. Another big stroke, and it's once again Khurram Manzoor taking charge and hitting this one over square leg. He's going to create his own space, his own length. He knows the wicket is on a slower side, so he'll have to force the issue. And he's doing that with a very clear mindset, as you just mentioned, roles defined. So he has absolutely no doubt about what he's out there to do. And he is making it clear to everybody, obvious to the bowling side, and to all the viewers. Khurram Manzoor is up with some fireworks. Yeah, he's very experienced, so he knows how to play at different formats. He's been around, the highest run getter, National T20. Oh, he's heaved it. Lucky for him. Lucky for him. Towards third for 4. He's going to go after you regardless, wherever you want to bowl to him. Yes, if it's there, he's going to go after it. And even if it's not there, he's still going to go after it. This one was certainly half volley, but he just wanted to hit it big and hard. And once again lost the shape, but he got 4 runs. And those runs are valuable. Doesn't matter how they come. Once again, doesn't time it, but gets off strike.
Karachi Whites, after the first over as the wicket maiden, are now making up for it. 29 for 1 and halfway through the fourth over. It's just amazing how you can keep yourself hungry for so many years. Khurram Manzoor, 38 years of age, been in this domestic circuit for a while and still want to do well, still want to go big for the team. That's just amazing. And on the other hand, it's class written all over Saud Shakeel. Just very pleasing on eyes the way he plays. Just a timer of the ball, doesn't look to hit hard, just want to time it. Different styles from both batters, both looking good. Saud Shakeel is someone who likes to use the pace, and he's a timer of the ball. This pitch, he'll have to just do something like that. Use of the feet, creates his own angle and hits it through the covers. Fielders can only watch it go to the boundary as he gets in on the act. And Karachi Whites move to 33. We are still inside the fourth over. Have a look at this. Goes down the track, makes a bit of room. Doesn't get the timing once again. Yeah, just as we were talking about the quality of his timing, he brings up 1,000 runs for himself in T20 cricket. Oh, that was close to the fielder, but will run down to the third boundary for 4. He will take it. Bowler did like it. For once it was in the air for a little while, but away for 4. 4 over done, 37 for 1. उर्दू कमेंट्री बॉक्स से आपका खैर मकदम करते हैं। मैं तारिक सईद हूं और मेरे साथ होंगे पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर कायनात इम्तियाज। अरशल शेख को जल्दी बुला लिया गया है, जिन्होंने 16 मैचों में 6 विकेटें हासिल की हैं। ऑफ स्पिन करते हैं और अब तक बड़ा अच्छा हाथ मिलाया है। पहली गेंद पर ख्वाजा की बड़ी विकेट गिरने के बाद खुर्रम मंजूर और सऊद शकील ने स्कोर को 38 रन तक ले गए हैं। बैंक अल फलाह की ये पेशकश है इनवेरिक्स सोलर एनर्जी नेशनल T20 कप, जिसे आप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से बराह रास्त देख रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में कायनात का हम खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। बिल्कुल यहाँ पे रन बनाने की कोशिश जारी है। अच्छा कमबैक था कराची की तरफ से पहली विकेट गिरने के बाद। और ये अच्छा फैसला है, जल्दी पावर प्ले के दौरान ही अरसल गुलाने का। लंबे कद के ऑफ स्पिनर हैं, ज्यादा जगह देने पर आमादा नहीं। सऊद शकील उनके सामने हैं, जो कि फॉर्म बल्लेबाज हैं, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेलकर आए हैं। लेकिन यहां पर मिस फील्डिंग हो गई, जिसका नतीजा हुआ 4 रन। उमैर आफरीदी थे फील्डर जिनने ये फाश गलती की। इस्लामाबाद की टीम नौजवान है, इनसे आप ऐसी तवक्को करते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत ही इजी बॉल थी उनकी तरफ आ रही, पैरों के बीच में से ये बॉल बाउंड्री की तरफ। कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड रहे अरसल अच्छी बॉलिंग करते हुए। और एक और गैप शॉट यहाँ पर खेला है सऊद ने, अपने बेस्ट शॉट्स खेलते हुए सऊद शकील।
एक और बाउंड्री लेने में कामयाब रहे। या पहले 15 मिनट तक इस विकेट के और बॉलिंग के आव भाव को बखूबी देखा था सऊद शकील ने, और उसके बाद अब उनका रंग जमना शुरू हो गया है। यहाँ फैसलाबाद में विकेट सुस्त है लेकिन अच्छी है बैटिंग करने के लिए। रन लेना चाहते थे लेकिन खुर्रम ने बिल्कुल भी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। 5 ओवर के बाद 46 पर 1 कराची वाइट्स। ये पहले ही ओवर में नाफे की विकेट हाथ से निकल गई थी कराची वाइट्स की, लेकिन उससे बेनियाज होकर खेले सऊद और खुर्रम। तो यही ये T20 का वर्ल्ड ऑर्डर भी है आज के दिन का। दूसरी जानिब तब्दीली हुआ चाहती है बॉलिंग में। पवेलियन एंड से अब आएंगे कलीम दिल की जगह पर मोहम्मद मूसा, जो इस टीम के सबसे तेज़ बॉलर हैं और सबसे आजमूदा कार भी इस्लामाबाद के। बिल्कुल ऐसा ही है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं माजी में। खुर्रम के लिए भी ये एक टेस्ट होगा। तेज़ खेलना चाह रहे हैं खुर्रम, जो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं टीम के लिए वो यहाँ पे बहुत काम आएगा। और शॉट खेला लाजवाब खुर्रम मंसूर ने, और गेंद गजों आगे गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के। ये पहला छक्का इस कौमी T20 कप का। बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं मोहम्मद मूसा, लेकिन पहली बॉल सही जगह पर नहीं पड़ी और बहुत बेहतरीन शॉट खेला है ये खुर्रम शहजाद ने। जहां उम्दा पिकअप शॉट था। खुर्रम मंसूर का, जो उन्हें बड़ी जल्दी 29 पर ले गया। ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का और ज्यादा मूवमेंट मिली नहीं है मां सिवाय उमैर आफरीदी के दीगर बॉलर्स को। थोड़ा फ्लैटर पिच यहाँ पे महसूस हो रही है। और बोल्ड, ये जल्दी हिसाब साफ किया और अक्रॉस द लाइन खेल गए। अपनी ऑफ स्टंप से हाथ धो बैठे खुर्रम मंसूर। मूसा ने रफ्तार पर मात दी उन्हें। खुर्रम यहाँ पे क्रॉस शॉट खेलते हुए बोल्ड हुए हैं। नो बॉल चेक करेंगे। लीगल डिलीवरी है ये मूसा की तरफ से। बिल्कुल क्रॉस गए यहाँ पे, लाइन रिसीव हुई और एक बेहतरीन आउट मूसा के लिए। दूसरी विकेट इस्लामाबाद की जानिब से। जहाँ बिल्कुल भी ये शॉट गेंद नहीं थी। खुर्रम मंसूर जानते हैं कि ये शॉट का अच्छा इंतखाब नहीं था। उनने बनाए 29, अच्छा खेल रहे थे 52 पर 2। शान मसूद जो हैं मिडिल ऑर्डर में खुद को आजमा रहे हैं। दरअसल सऊद शकील इनको आजमा रहे हैं, जो कप्तान हैं कराची वाइट्स के। ये पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान हैं, लेकिन रंगीन कपड़ों में इस वक्त। अच्छी फॉर्म में रहे हैं इस सीज़न में शान मसूद।
टेस्ट क्रिकेट खेले, कराची वाइट्स की इन्होंने नुमाइंदगी की थी कायदे आज़म ट्रॉफी में भी, मौसम सरमा में। और ये फैसलाबाद की मुद्दतों से ऐसी पिच रही है, ये कई शॉट्स खेलने की आपको इजाज़त नहीं देती, उनमें से ये भी है क्रॉस द लाइन। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खुर्रम अपना काम यहाँ करके गए हैं 17 बॉलों पे 29 रन बना के। अब सऊद और शान की बारी है यहाँ से इस गेम को आगे ले जाने के लिए। यहाँ कराची की अभी तक जो चालें हैं और जिस तरह का उन्होंने अंदाज अपनाया है, ये काबिल दीद है। ये T20 के जो जदीद तकाज़े हैं उनसे हम आहंग है। विकेटें गिरने पर भी खुर्रम ने जिस तरह जवाबी हमला किया, और उसके बाद ऑफ स्पिनर की आमद हुई, सऊद ने उनको 2 चौके लगा दिए। अरसल शेख को 50 रन उनने बना लिए हैं पावर प्ले में, अच्छी इब्तिदा कही जाएगी। अपना रन अप जो है विकेट लेने के बाद मूसा ने और लंबा कर दिया, अब वो दायरे के बाहर से आ रहे हैं। उम्दा शॉट खेला, लेफ्ट शॉट सऊद शकील का, और ये उनका खासा, इससे वो महजूज हुए होंगे यकीनी तौर पर मूसा की रफ्तार को काम मिला है। बेहतरीन शॉट सऊद की जानिब से क्रीज यूज करते हुए, जैसा कि देख सकते हैं साइड पे होके जगह बनाई है, बॉल को मिडिल में लिया है और एक बेहतरीन 1 बाउंस 4। फाइन लेग अभी भी दायरे में है, स्क्वायर लेग पीछे है और डीप थर्ड भी। एक और उम्दा शॉट खेला दिलकश तरीके से सऊद शकील ने, और ये महज अपना बल्ला गेंद तक लेकर गए। उनकी प्लेसमेंट काबिल तारीफ, काबिल सताइश। 6 ओवर के बाद 61 2 पे। बहुत अच्छा, ये जो पहला मार्का है ये कराची की टीम मार गई है। 61 रन उन्होंने बनाए, हालांकि गेंद स्विंग होकर आई थी पैड्स की जानिब, जिस पर LBW आउट हुए ख्वाजा नाफे। फिर खुर्रम ने यहाँ पर लाठी चार्ज करना शुरू किया, रन उनके बल्ले से आते रहे। सऊद शकील भी अच्छी फॉर्म में अब तक नजर आए हैं। ये उम्दा पिकअप शॉट था, अगली गेंद पर खुर्रम बोल्ड आउट हुए, लेकिन टीम के लिए खेलते हुए, और फिर पावर प्ले का इख्तिताम किया इस शानदार चौके के जरिए सऊद ने। अच्छा मौका है यहाँ पर अरसल के लिए कि अपने कदम जमाएं। 2 इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने हैं, फील्ड अब खुल गई है, और इस विकेट में हमेशा सी मदद रही है। फैसलाबाद की विकेट जो है ये स्पिनर से ज़्यादा मंसूब रही है फास्ट बॉलर्स की निस्बत। ये दोनों प्लेयर जो खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा टाइमिंग के प्लेयर हैं। यहाँ पे टाइमिंग के शॉट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एरियल शायद ना जाएं। सुनहरी मौका है कराची की टीम के लिए यहाँ पर बड़ा स्कोर बनाने का, क्योंकि आज ओस के गिरने के कम इम्कान हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, और ये जो वस्ती पंजाब का इलाका है, जब यहाँ पर मतलब साफ ना हो तो फिर ओस जो है ये कम कम ही गिरा करती। दोनों टीमों ने 2-2 स्पिनर्स शामिल किए हैं, इसलिए स्पिनर्स जो हैं वो तो खुश होंगे
पिच को देखकर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ऊपर देखकर। चीकी सिंगल्स लेने की कोशिश जारी है यहाँ पे। स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस लेने के लिए दोनों प्लेयर्स को। दोबारा से पार्टनरशिप यहाँ पे लगी है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स दोनों। अच्छा ओवर अरसल शेख का जिसमें उन्हें खामोश रखा शान और सऊद को 63 पर 2। कराची का जो टॉप ऑर्डर है, दरअसल इनका जो बैटिंग ऑर्डर है इसमें बालादस्ती बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अभी ताहा और दानिश हैं, वो भी दोनों उल्टे हाथ से खेलते हैं। तो कराची का ये बैटिंग ऑर्डर है 2/3 ये लेफ्ट हैंडर्स पर मुश्तमिल है। अच्छा शॉट, कट शॉट खेला सऊद शकील ने, एक बार फिर प्लेसमेंट उनकी कारगर रही और चौका पाया। एक बार फिर मूसा की पेस को यूज करते हुए बेहतरीन टाइमिंग के साथ सिर्फ जगह दिखाई है बॉल को, और एक और चौका लेने में कामयाब रहे हैं। जब आप फैसलाबाद आते हैं तो जो बैट का स्वीट स्पॉट है, खा आप मूसा जैसे तेज बॉलर को भी खेल रहे हूँ तो वो बदल जाता है थोड़ा सा। गेंद बल्ले पर इतनी ऊपर लगती नहीं है। सऊद शकील को यकीनी तौर पर ये रास आएगी पिच। 35 रन पर वो खेल रहे हैं और T20 क्रिकेट में ये काया पलट हुई है इनके करियर की। पिछले साल जब खेले थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, उससे पहले इन्हें सिर्फ रेड बॉल का ही स्पेशलिस्ट ख्याल किया जाता था। बड़े बाउसलूब बल्लेबाज हैं, अभी भी वाइट बॉल क्रिकेट में भी खेलते हुए बहुत अच्छा लगते हैं, मुतवाज़िन रहते हैं बैटिंग क्रीज पे। यहाँ पे कॉल की नो की शाउट थी और एक ओवर थ्रो का रन लेने में कामयाब रही कराची वाइट। मूसा बिल्कुल खुश नहीं थे इस रन से। जगह बनाना चाहते थे ताकि ऑफ साइड में शॉट खेल सकें, लेकिन मूसा ने ये फराहम नहीं की। अभी तक कोई बाउंसर नहीं किया गया, हालांकि फील्डर है अभी भी डीप स्क्वायर लेग पर, एक डीप कवर पॉइंट पर भी हैं। ये 7.3 ओवर्स हो चुके हैं। बाउंसर अभी तक हमने नहीं देखा। बाउंसर और यॉर्कर अभी तक 2 गेंदें। यहाँ पे आपकी बात सुन के थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश जरूर की थी मूसा ने। शान को काफी मुश्किल हो रही है मूसा को टैकल करने के लिए। डोमिनेटिंग वे में खेल नहीं पा रहे हैं। लंबी फॉर्मेट के प्लेयर हैं शान। जी हाँ, और स्वीट स्पॉट की जो बात हो रही थी, क्योंकि फैसलाबाद में आकर ये कुछ नीचे हो जाता है तो शान मसूद का जो रिकॉर्ड है इस पिच पर वो भी इतना अच्छा नहीं है। 8 इनिंग्स में 112 रन हैं इनके, 14 की औसत है। क्योंकि ये पसंद करते हैं, ये इस्तादा रहकर सीधा खड़ा रहकर बैकफुट पर
खेलने के शौकीन हैं और आदी हैं, लेकिन इस पिच पर आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना पड़ता। उसके अलावा बुक क्रिकेट ज़्यादा महसूस होती है, सीधी सीधी जिस तरह आप कह रहे हैं, खेलने के आदी हैं ये। इम्प्रोवाइजेशन थोड़ी करनी होगी रन्स बोर्ड पे लगाने के लिए। 8वें ओवर की आखिरी गेंद है ये। जी हाँ, अच्छा ओवर रहा है, लेकिन इसको ख़त्म करना चाहेंगे बेहतरीन अंदाज में, और स्टंप्स की तरफ से ये निशाना बनाने की कोशिश की थी। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा पिछले 2 ओवर्स में, नपी तुली बॉलिंग इस्लामाबाद की 69 पर 2। Footwork, but doesn't work. Has gone to the boundary. I don't know what he's thinking. Surely a 4. None of the other fielders are interested in that. 9th over in progress. 71 is the score. They've lost 2. Nafe and Khurram Manzoor. It's a very strong square of the wicket. That's the longer boundary there. 74, 75 meters there. Well, the bowler thinks that there was a chance. We shall see what the replay suggests. Shan Masood was the man on strike, and he goes to the non-strike run. Let's have a look. Yeah, definitely this was a thick outside edge, not an easy one, but it was well bowled by Arslan. Arslan has also represented Pakistan in the Pakistan under-19s, and as far as I know, I think he has a hat-trick to his name as well. Tall off spinner, bowling in the right areas, and the Pakistan Test captain, well, he'll have to go. Rashid Riaz says it's pad first, and dejected look on the face of Khurram Manzoor, who is looking at this game from the dugout, as Shan totally disagrees with the umpire. He's still looking back, still hoping for something which isn't going to happen now. Only to his disappointment, he'll have to walk back, as Arslan picks up a very important wicket. Yes, there are no reviews out here. Let's have a second look. Oh, impact outside off. That's what it seems like. Yeah, no wonder that he was a bit dejected with that. 8 for Shan Masood. It's 75 for 3. स्लो में मिल सकता है, जरा अल्ट्रा स्लो में जरा दिखाइएगा, स्पेशली पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे अगर रोक लें। लेजी चल रहा है। शायद आवाज आ रही है, शायद नहीं, लेजी इज नॉट वर्किंग। Mohammad Taha, the new batter in.
side 10 overs. They've lost 3. Well, they're looking to score that 160 that they've been hoping for. Seems like there's more available because the way they're going, they've just been pushing hard onto everything that's been bowled at them, especially in the power play. Now you got another set of 2 left-handers at the crease after Shan. Let's have a look at that again. Yes, the ball just keeps on going with the arm. Shan looking to cut, and well, it's not clear. In the end, it seems as if the ball would have struck the pad. It would have been outside the line of off stump. That is what the replay suggests. As 9 overs are now complete, and it's 76 for 3. अगर ये लास्ट मोमेंट पे स्लो करे पता नहीं बैट भी लगा या नहीं लगा इसका लेजी नहीं काम कर रहा है because he's not responding. शायद आवाज आ रही है, शायद ने बंद नहीं कर दिया, That's the story so far. Karachi Whites winning the toss and deciding to bat first. Are 76 for 3. They've lost their 3 top order batters, Nafe, Khurram and Shan. Oh, it's a bad ball. That had to be put away. Half tracker down the leg side. 4. Farmanullah, his first delivery is extremely short. Allows Saud Shakeel to just pivot across and put it in the gap. Or it's Taha who helps it on its way to the boundary. Easy pickings. It's quite a star-studded side, Karachi Whites, defending champions. And a lot of known faces and names. Naf has done well recently in the T20 circuit. In Bangladesh, performed pretty well. And then, of course, Khurram Manzoor has played all the editions of National T20. He's not new to this. Shan Masood, Pakistan's test captain. Saud Shakeel, the vice captain, also plays the white ball. Danish Aziz, it's been a while since we've seen him. Pretty packed dugout that, with names in there and reputations. And now the way we've seen these two, especially Saud, would look to bat long all the way and play that role. That brings up that question of do we have a role for anchors in T20 cricket? Yes, we do, to a certain extent. 7 to 15, such a key zone in that 20 overs. Yes, you need anchors with turbo injection. It's T20 cricket, and I think the nature of the surfaces also plays a role in suggesting who will play and how he'll play. And this slow and sluggish surface might just allow the anchors to just take a bit more of time, and also to make sure that the teams don't lose their way in trying to just keep on going big. This one was a full toss, and Taha just helped it for a single. As 10 overs bowled, it's 85 for 3, and it's time for drinks.
back after drinks, and it's the situation at the moment. It is 85 for 3, halfway through. Khwaja Nafi, the first one to go, straight full into the block hole, given out. Then it was Khurram Manzoor swinging his bat wildly. And then this one, Shan Masood, given leg before. Umpire feels some part of it is going on to that leg somewhere. He feels he's got some bat onto it. And that's the story. You've got Pakistan under-19 captain Saud Beg to your left of the screen. Bottom left. Very well-known names there in that back seat. He's bowled well. He's attacking the stumps. The ball coming in with the arm. The left-handers are never comfortable with this sort of an angle, unless they decide to use their feet to put him off his line and length. Just have a look at this. Tight within the stumps. The batter will have to take a risk. He's into his 4th over. He's picked up a wicket, important one of Shan Masood, and given away only 18 runs. Once again, excellent bowling this. Very tight. Just a single. Both these batters, Taha and Saud, are wonderful players of spin bowling. So it's not an easy thing to bowl to them in this game. Just have a look at this easy action. Eyes on the target. Good high arm release, and everything simple and effective. He's got the height there also, with that high arm action to get him that extra bounce wherever available. Is there a shot which they can probably try over extra? There's no protection in the back, so with the spin, if you can open the face, just make some room. Because the degree of turn is not very exaggerated here. Get the gauge of it. Perhaps that's why they haven't opted to go over extra, because the ball is coming in with the arm. So probably get to the pitch of the ball and maybe push it in the gap on the own side, the shorter boundary as well. But he's bowled well. He's varied pace as well. As he completes his quota of 4 overs. Brilliant spell. 20 runs given away. Just 1 wicket for him. As 11 overs gone, and it's 87 for 3 for Karachi Whites. Arslan did well. 4 overs, 1 for 20. Was brought in that power play just to stem that run flow, and he's managed that well. Now is the building process, and so is the man made for it. He's tailor-made for that. Loves these kind of situations, just to slide himself into the innings and use those gears as the time progresses. Width. Have to be a touch careful, because that's a shorter part. There is a protection. There's a sweeper cover. It's a 64-meter boundary there. That's the man there, square of the wicket. That's a shot, and the man available straight into the hands. He's elevated that, but he's played it straight to Kaleem. That is wicket number 4. 4th wicket down now for Karachi Whites, as Taha decides to go over the top, and he didn't get the timing that he desired, ending up in the hands of the fielder at long off. And the front foot is absolutely fine. Bit of Sikandar Raza in this action, hiding the ball behind his back, and safely pouched. Taha
scoring 9 of 13 deliveries that he faced. Danish Aziz, he's been a regular member of this side. National 20 knows him very well. From here, one of the performances of his in Pindi, I remember, got him a place in the Pakistan T20 side. 70 matches to his name, over just above 1,000 runs. Strike rate of 125, and he's here with a job on hand with the captain along. 88 for 4 in the 12th over. Oh, it's gone through. It was a quicker one, straight away allowing Danish to get off the mark with the boundary. It was fired in by Nasir, and it's gone as quick as it came. Yes, looking to bowl a seam-up delivery, and not a great piece of fielding there at point. As Danish is off the mark with the boundary. This one is slower in pace. And we all know that this pitch is also on the slower side. So the batters don't find it easy to time the ball. And this is another look at the wicket taken at long off. And 12 overs complete as Karachi Whites are 92 for 4. देखिए पावर प्ले में 2 विकेटें गिरी और उसके बाद भी ये कराची रीजन की जो बैटिंग है उसके 2 मोहरे जो हैं वो पिटे हैं 9वें और 12वें ओवर में। तो हम कह सकते हैं कि किसी हद तक इस्लामाबाद की टीम जो है उसको मोहलत का मौका मिला है, लेकिन सऊद शकील ये डट कर खड़े हैं। अब तक बहुत जारहाना इनिंग्स उन्होंने खेली है। 12 ओवर्स में सिर्फ 25 गेंदें उन्होंने खेली हैं। ये एक हैरानकुन बात है, इतना ज़्यादा स्ट्राइक नहीं ले सके। तो अब मामलात को इनको अपने हाथों में ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। वही करना चाहते थे लेकिन मोहलत मिली नहीं है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा आउटफील्डर की जानिब से। अली यूनुस कमेंट्री बॉक्स में वापस आ चुके हैं। खुशामदीद अली। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ये अच्छी खबर नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कल से ही फैसलाबाद में काफ़ी बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पे सब तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये जानते हैं कि यहाँ पे बारिश होगी तो बहुत तेज़ होगी, इसलिए पहले ही तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। जी हाँ अली, आज बता रहे थे जब लाहौर से निकले तो बारिश ने इनका इस्तकबाल किया मोटरवे पे। तो लगता है कि वो यहाँ पर भी पहुँच गई है इनके आते ही। यहाँ पूरा रास्ता ही तकरीबन बारिश होती रही, लेकिन जैसे ही मैं फैसलाबाद में एंटर हुआ तब बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं था। और अब शायद शाम को दोबारा से, कल भी हमने सुना कि यहाँ बारिश होती रही रात में। जी हाँ, नर्म नर्म वो बूंदा बांदी है अभी तक। फैसलाबाद ज़्यादा बारिशों के लिए जाना नहीं जाता, लेकिन ये जो स्क्वायर ये जितना ड्राई है जाहिर है कि मुश्किल हो जाएगी अगर
कुछ देर बारिश हुई तो फिर ग्राउंड्समैन के लिए सूरत हाल को संभालना। या होमएज अप्लायंसेस, क्या बात है, क्योंकि इनके बगैर नामुकम्मल है क्रिकेट। जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं हमारे अप्लायंसेस हैं, अब इनको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। सऊद शकील, जैसे आपने कहा, तमाम तर जो जिम्मेदारी है अब इनके कंधों पे है, और अच्छी बैटिंग की है। और ये जो पिच है तारिक भाई, इनके स्टाइल और बैटिंग को सूट भी करता है, क्योंकि टच प्लेयर हैं, गैप ढूंढते हैं, जोर से हिट मारते नहीं हैं। शुरू में हमने देखा था खुर्रम मंजूर ने ज़रूर कोशिश की, दायरे का भरपूर फ़ायदा उठाया, जिस वजह से वो रन्स जो पहले आए वो बहुत तेज़ी से रन्स आए। लेकिन जो भी बैटर यहाँ पे ज़ोरदार हिट मारने जा रहा है दायरा खुलने के बाद, वो ज़्यादा कामयाब हो नहीं पा रहा है। ताहा को हमने देखा, कोशिश उन्होंने की, अपनी विकेट गंवाई। यहाँ 61 रन बने थे पावर प्ले में इन साहब की बदौलत। खुर्रम ने आज बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, गो कि ज़्यादा लंबी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन T20 के एतबार से टीम को जो ज़रूरत थी वो उनने बिल्कुल पूरी की। 17 गेंदों में 29 रन बनाए, और यही चाहिए T20 के खेल में, और इसी तरफ पाकिस्तान को जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट को भी सोच जो है वो यहीं से बदलना होगी। यार ये जिस तरीके से वो आउट हुए, जैसे आपने कहा कि इंटेंट क्लियर थी कि बड़े हिट मारने जाएंगे, मूसा की पेस और लाइन बिल्कुल एक्यूरेट थी, जिस वजह से बीट हुए। और ये सेलिब्रेशन है, ये बताती है कि कितनी बड़ी विकेट हासिल की है मूसा ने। अच्छा लगता है खुर्रम मंजूर को अब भी क्रिकेट के मैदानों में देखकर। 38 बरस इनकी उम्र है। इस पर हम करेंगे बात कि तजुर्बा कितना ज़रूरी है टीमों के लिए। 13 ओवर्स के बाद 97 पर 4। अच्छा शॉट खेला, इस गेंद पर ज़्यादा रफ्तार नहीं मिली। हालांकि सऊद शकील जो हैं तकरीबन इसे प्लेस करने में कामयाब हो चले थे। तो पहले 6 ओवर्स में 61 रन बने। उसके बाद रन्स जो हैं वो बिल्कुल, वो जब हम जिस दौर में अखबार में काम करते थे तो डिस्ट्रिक्ट डेस्क पे जो खबरें आती थी वो बहुत सुस्त रफ्तार हुआ करती थी, उसी रफ्तार से रन्स आए हैं नॉन पावर प्ले मरहले में। अच्छी बॉलिंग है, और अच्छी तरीके से समझा है इन बॉलर्स ने अब कि इस पिच पे, क्योंकि जो पहले ही थोड़ी स्लो पिच हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से स्लो पिच है और उसमें जितना स्लो बॉल करेंगे, और ये एक्शन एक इंटरनेशनल बॉलर की याद दिलाता है। सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे से खेलते हैं, पीछे से हाथ लेके आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बॉल थोड़ा स्लो कर रहे हैं, और इस सिंगल के साथ 100 रन मुकम्मल हुए कराची वाइट्स के। क्योंकि अगर आप तेज बॉल करेंगे, पेस को के साथ खेलने का मौका देंगे बैटर को, तो रन आएंगे। हमने देखा है ग्रिप करके बॉल टर्न हो रहा है, तो आप स्लो बॉल करेंगे तो ज़्यादा मुफीद होंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर अपनी रफ्तार को थोड़ा कम करेंगे तो तभी आप यहाँ पे इफेक्टिव हो सकेंगे एज अ स्पिनर। या इस तरह पहले जो बॉलिंग का सिलसिला था ये सुनील नारायण ने शुरू किया था। पहले स्पिनर थे जो गेंद छुपा कर लाते थे ताकि सीम देख ना सके बल्लेबाज। 102 पर 4।
या तारिक भाई, जैसे आप बात कर रहे थे कि पहले 6 ओवर में 61 रन आए थे और 2 विकेट्स गिरी थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ी रन स्कोरिंग में थोड़ी कमी आई है क्योंकि दायरा खुला है। खुर्रम मंजूर आउट हुए हैं, साथ शान मसूद भी आउट हुए। तो जैसे जैसे विकेट्स गिरती गई, रन्स बनाने का सिलसिला भी थोड़ा कम होता चला गया और अब सारी जो जिम्मेदारी है वो साउद शकील पे है। 160 रन इन्होंने कहा था टॉस पे कि 160 रन चाहेंगे कि पहले बैटिंग करते हुए बनाएं। उसके लिए इनको एंड तक खेलना पड़ेगा। 11 रन पर ओवर बनाते हैं तो 160 के करीब कहीं पहुंचते हैं, तो वही देखना होगा। दानिश अजीज में भी वो पोटेंशियल है। देखिए 11 रन पर ओवर करते हैं तो 164 तक पहुंचेगी टीम। डिसअपॉइंटेड होंगे शान मसूद भी। अच्छे टच में नजर आए थे शुरू में, लेकिन ज्यादा लंबी इनिंग नहीं खेल सके। कलीम दिल जो हैं आज इन्होंने पवेलियन से बॉलिंग की इब्तिदा की थी, अब लाए गए हैं फार से। अभी तक यहाँ अली इमरान ने बॉलिंग नहीं की। ये जो इनके बराबर में हैं, ये अच्छे ऑलराउंडर हैं। एक ज़माने में नई गेंद किया करते थे और बहुत मौसर थे। काफ़ी मुअम्मा है इनका जो मुकदमा है क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान को एक बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है। ये अच्छा शॉट खेला, स्कोर ऑफ द विकेट। दूसरा रन ले गए सऊद शकील ने। ये अपनी निस्फ सेंचुरी का मार्का मार लिया है। बहुत ही शानदार इनिंग्स सऊद शकील की। वो पहले बल्लेबाज बने हैं जिनने इस कौमी T20 में बैटिंग का संग मील अबूर किया। महज 34 गेंदों में विकेटें उनके सामने गिरती रहीं, लेकिन ये आगे बढ़ते रहे। कप्तानों वाली इनिंग खेली है, लेकिन अभी थोड़ा डिले। चेक करेंगे बाउंड्री को कि कहीं कोई हिस्सा जिस्म का कहीं बाउंड्री स्कर्टिंग को तो नहीं लगा है फील्डर की, लेकिन यहाँ पे अच्छा काम किया है। लगता है कि अच्छे तरीके से रोका है। अच्छा सेफ है, 2 रन ही बनेंगे। अरसल शेख थे जिनने आज बड़ा उम्दा बॉलिंग स्पेल किया। अच्छी नपीतुली बॉलिंग की। दरअसल इन्होंने खामोश किया अगर कराची की तोपों को। विकेट भी हासिल की, क्योंकि आसान नहीं था उस वक्त। सऊद जो हैं जिस तरह की फॉर्म में लग रहे थे, और इसे चलता किया। 4 रन आसानी के साथ पाए सऊद शकील ने। ये गेंद लेग स्टंप के खासी बाहर थी और सजावार थी बाउंड्री की। इतनी समझदार बॉलिंग नहीं है ये। इसी जगह पे तो साउद शकील ढूंढते हैं। ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रोल किया अपना बल्ला और 4 रन हासिल किए। गैप तलाश किया बहुत अच्छे तरीके से, और यही क्वालिटी रही है साउद शकील की इस इनिंग में कि गैप्स बहुत अच्छे तरीके से तलाश किए हैं। इस पिच को अच्छे तरीके से परखा है और उसके अकॉर्डिंगली बैटिंग की है। 154 की जो स्ट्राइक रेट है। सऊद शकील ने 34 गेंदों में निस्फ सेंचुरी स्कोर की, और T20 में अब ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ बैट्समैन लगते हैं। ओपनिंग करते हैं, जाकर नई गेंद पर भी जाकर स्ट्रोक खेलते हैं, और एक बल्लेबाज के तौर पर एक नई दुनिया में ये दाखिल हुए हैं। अच्छा शॉट, उम्दा बैक कट। यहाँ पर दूसरा रन हासिल करेंगे। आफरीदी थे फील्डर उमैर। अच्छा ओवर कराची के लिए। गेंद किसी हद तक बल्ले पर आई। 113 पर 4। या तमाम तर नजरें रहीं साउद शकील पे जो कि कप्तान है कराची वाइट्स के। बहुत ही शानदार इनिंग। ऐसा लगा जैसे पहले से ही सेट होके आए हैं। जिस तरीके से शॉट्स देखे, थोड़ा ज़बरदस्ती ज़रूर की थी, लेकिन एक टच प्लेयर हैं, प्लेस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, गैप को ढूंढते हैं और अपनी वैरायटी दिखाते हैं। कितनी शॉट्स अवेलेबल हैं इनके पास। बहुत ही बाकमाल इनिंग, बहुत ही कंट्रोल वाली इनिंग खेली अपनी टीम के लिए। एक बहुत ही अहम इनिंग कराची वाइट्स के लिए। स्ट्रेच करने पर मजबूर किया सऊद शकील को।
यहाँ पर इसके बाद ज़्यादा बैटिंग नहीं है कराची की। 7 बेग हैं जो विकेट कीपर हैं, अभी तक उनको मनवाना है बैटिंग के शोबे में। अच्छे विकेट कीपर हैं वो। फिर सुहेल खान और मोहम्मद उमर आएंगे, वो कुछ स्ट्रोक खेल सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि 5 ओवर्स बाकी हैं इसलिए ये दोनों खिलाड़ी जो हैं कदरे सर झुकाकर इस वक्त खेल रहे हैं। और यहाँ पे जल्दी करनी होगी, लेकिन बेहतर थ्रो की ज़रूरत थी मूसा की जानिब से। ये अच्छी क्वालिटी रही है कि रनिंग बिटवीन द विकेट साउद शकील रहेंगे तो वो पुश करते हैं अपने पार्टनर को कि तेज़ भागिए, रन को जज कीजिए। ये देखिए अच्छी पुश किया था उन्होंने, स्ट्रेट पे देख लिया था। इस बार बड़ा हिट और फील्डर वहाँ मौजूद है सीधा उनके हाथ में। अली इमरान है फील्डर, बहुत ही आसानी से कैच लिया और दानिश अजीज़ को चलता किया। एक अहम मौके पे विकेट हासिल किया नसीर ने। जहाँ और जिस ट्रेजेक्ट्री के साथ बॉलिंग कर रहे थे नसीर, आसान नहीं है इनकी गेंदों पर हवा में उछाल देना गेंद को, इसलिए लॉन्ग ऑन के फील्डर को मात नहीं दे सके। एक आसान सा कैच गया, लेकिन उससे भी मुकम्मल किया जाना ज़रूरी था, बखूबी कर दिखाया। यहाँ पर अली इमरान ने दानिश अजीज़ बना सके 12, 116 पे 5। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज गए हैं, दूसरे आ गए हैं। 7 बेग। ये विकेट जो है ये और ज़्यादा सुस्त लगने लगी है, जैसे जैसे ये गेंद जो है ज़ाहिर है इसकी चमक कम हुई है, तो आसान नहीं है इस वक्त स्ट्रोक खेलना इस पिच पर। और अगर यहाँ से ये 165 170 तक चले जाते हैं, ये भी रुक कर आई, तो ये अच्छा स्कोर रहेगा कराची के लिए। उनके पास भी 2 स्पिनर्स हैं। यहाँ 160-65 तक तो पहुंचना होगा। और ये जिस तरीके से हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो भी ज़बरदस्ती बड़ी हिट मारने जाएंगे उसके लिए ये सरफेस है नहीं, आपको प्लेस करना पड़ेगा, टाइम करना पड़ेगा। फिर से गेंद रुक कर आई, इसलिए अपना शॉट है वो चेक किया। यहाँ पर सऊद ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। नसीर 2 विकेटें ले चुके हैं 3 ओवर्स में, 117 पे 5। $117 for 5, 4 to go. Musa Khan, after a long time. I think he shared down to third for a single. Has it gone through? Oh, it's gone through. We are way high up here in our commentary box. You need binoculars to figure out. That's a 4. And once again is Umair Afridi with the misfield. Should have been only a single, but unfortunate. Went for a boundary. Musa's not happy. Of course he won't be. Last overs are very important. Saad Beg on strike. Yeah, there was a time when Pakistan got a few slinging action bowlers. Musa Khan was one of them.
Zaman Khan also at around the same time. He played a test match for Pakistan. Bukhar Yunus was the head coach, took him to Australia. Sohail Khan, I'm still yet to figure he likes bowling more or batting. He's really fond of batting and he backs himself under the captaincy of Salman, but he's actually scored a 50 batting at 3 or 4. I think that was the only opportunity that was entrusted into him at that higher number. So Shakeel still trying to time the ball. There have been occasions, Kainat, we've had misfieldings. Have a look at this. Gone through the legs. It's just a matter when you take your eyes off. This was an attempt where he's dived over the ball. It's quite a bumpy outfield, just to give a bit of a leeway to the fielders in the deep. Nice looking shot. Backed away, made some room for himself, and he's played that to perfection. And Saud once again through the line, just timing the ball perfectly. And he has been exceptional throughout the innings. Timing the ball, placing the ball in the right areas. So to Musa, just timing the ball towards extra cover. And didn't quite time that. He's spoken about 160. Saud Shakeel at the toss. You still get a feeling it's on a slower side. You're not really timing the ball unless you're really forcing yourself into the shot. We talk about there are actually 5 left-handers we've seen up till now in this batting lineup. Saud Shakeel, Shan, Masood, Taha, Danish Aziz, and now Saad Beg. End of the over with a dot ball, 127 for 5. That's the batting card there. Saud, the man who's leading the way, 62, still counting. And he's had cameos from Khurram and Danish Aziz. Reverse, he's found himself the way to get to the boundary. Slightly sluggish outfield, but the ball still wins the race. Oh, has it? Not. I think he's managed to pull it back. Well, good chase at the end by Musa. He saved a couple of runs for the team. Here we go. We'll have to see if he was able to pull it back. He did. Good fielding at the end by Musa. I saw Shakeel still punching through to get those singles. Another shot, and this has been dropped. Arslan is the man who's culprit on that occasion.
It's not humid out there, so don't think that the ball is slipping away. It's bone dry at the moment. I'll talk about the fielding standards. We have seen it throughout Champions Trophy as well. Too many misfieldings. And still, the domestic level has to be really high. The fielding standards. He got there in time. He's just managed to let it slip away. That's what they say. Usually try to get underneath the ball as quick as possible. Be still. He's on the slide when he's dropped that ball, but surely you're right. This is the highest level on the domestic circuit. You've got to be right on top of your game. You're playing among some internationals here. Saud, Shakeel being one of them. Soft hands on that occasion. He's a master of strike rotation and then getting that odd boundary going. 134 for 5. After a heavy iftar, everyone's just coming out. It's a pleasant evening here in Faisalabad. In fact, a nice cool breeze. We've had some good crowds here in the Champions One Day Cup. In fact, full houses. Musa Khan. Again, the timing is missing, trying for those big shots. Smart 8, make your next smart move. That's the one for you. If you're the one into some modern stuff, this is Wigotel, one of the latest models. Look very good in your hand, Kainat. I'll probably get one for myself as well. I'm sure there are colors in it. He's hit that hard back at the bowler. Won't be a boundary. Again, the fact that the outfield is slightly sluggish. Bit of heavy grass there. Yet another throw towards the fielder and missed. It went down the ground towards the straighter boundary. Good fielding to start off with, but ended with a couple of runs. He could have thrown the ball himself. Was in a good position too. This time we'll get on the bounce to the fielder there. Just not getting that timing. I guess the best thing for Saud would be to try and get Saud on strike, who's been out there since ball 1. Opened the innings for Karachi Whites. But we haven't seen some huge shots by Saud Shakeel. Just timing the ball in a good way, but it's a T20 game. They still need a couple of runs to set a good total. Yeah, upish, but still will find the fielder. Yeah, you're right, Kainat. It's been exactly 12 deliveries now. 12 deliveries means 2 overs since the boundary has come. And you look to maximize in those last 5 overs of a T20. Big teams usually target 60 or 70 if that's possible, provided they've got some power hitters. Probably need Sohail Khan to come out there if it's possible. Just 1 over to go after this. Iqbal Stadium, Faisalabad.
That's high in the air and just tips over. Maximum from Saud Shakeel. Well, finally, a good 6 by Saud Shakeel. But seems like we might be seeing more like this from him, using the pace of Musa towards the boundary. Oh, he's picked that up, but to the field. Catching has been good this time around. Saud Shakeel goes, and probably no questions asked, because now we're moving into that final over of the innings. Captain gets out on the score of 76 of 49. A brilliant knock from Saud Shakeel. Again, the fact maybe the idea was right, the shorter part of the ground, but he just couldn't time it. Shamil Hussain takes the catch. And Karachi Whites lose their 6th wicket. 146 is the score. Saud Shakeel 76. Well, the new batter in is Saqib Khan. I thought Suhail Khan would be sent for those lusty blows since it's the last over. And the captain trusts Saqib Khan. I haven't seen him. I think most of us wouldn't have. This is 7th appearance at this level. And I'm being joined by Salman. But there he is, been wanting to get out there. Yes, Sohail is somebody who believes a great deal in his hitting ability. I remember captaining one of the teams where he was one of the players, and he was always up for batting. He would start padding up when 6 wickets would fall. A slower ball gone wrong completely. Yeah, I just mentioned that while you were in that other room, that Suhail Khan is indecisive. Is he loves batting more or bowling more? I think you're the only captain who's allowed him to go up in the order, and he scored a 50, I think. He delivered. He was after me in the dressing room. He said, Kaptan, मैं करके दूंगा. So we thought, yes, why not? Saud Shakeel batting wonderfully, keeping the innings together, holding it. As this one is hit over point and will be a boundary. One bounce across the ropes. Saud getting some valuable runs. Yeah, a bit of width available, and he's actually thrown his bat at that. And Saud is a proper batter. And bats up in the order. Here in this setup, he's come down. He saw the opportunity, and knowing that there was only one fielder patrolling that offside boundary, he took his chance. It's just the last over. The field that he has on the offside is not the one that is going to entertain a pace on delivery. So he needs to be careful, because he bowled this one quickly, allowing the batter to do what he did. Yeah, this is what the field is set for. Change of pace. And the batter, on the other hand, needs to know that what he's going to get most. Concerned coaches over there, Iqbal Imam and Mahmood Hamid. Back of the hand, he reminds me of Imran Khan Jr. playing for Peshawar years back. Very similar to what Imran Jr. used to do. And on this slow track, this delivery can be pretty difficult to score off. Once again, you see back of the hand and no connection. In terms of timing, nothing there, just the one.
if you know him, he's not very happy. Because he probably would have thought that Saqib should have waited. By this look, you don't need to know him. He's not happy. I think he's a big, powerful bloke, and he should have been sent because you would need somebody. But let's see if Saqib has something which we all don't know so far. Well, he's got a boundary. Wasn't the intention to play it there, but, well, the result, they'll take that. A touch fuller this time, the slow one, and the intention was to go big over mid-wicket. But once again, batters losing shape while trying to go big, not keeping the eye on the ball till the last moment. Lucky boundary for Saqib. Intent is good, but the process, that needs to be addressed. And happy faces there in the crowd. Direct hit would have been curtains, surely. They got closer to what Saud Shakeel wanted at the toss, 160. Somehow they managed to get to 157 with one ball to go. He would have been out, surely, had Ruhail hit the stumps. Saad had given up. Saad Beg will face this last ball. But a spread out onside field in the deep. Slower one, he's got too much height. Absolutely no distance, and he's been dropped. That's not the first time that Islamabad has dropped a catch, and this time Ali Imran got under it. Be a question that'll be asked, because it's not wet conditions out there, but they still managed to drop quite a few. End of the innings, 159 for 6. So 160 is the target for Islamabad in this opening game of the National T20. Yes, now the other side, Islamabad, would require to get to 160 in order to win this game. And Karachi Whites, the whole innings being held together by their captain Saud Shakeel, batting through magnificently, playing sensibly, and on the other hand, Khurram Manzoor earlier on developed a good partnership with Saud, and then the wickets kept falling, but Saud kept going. And in the end, Karachi Whites managing 159 for 6 as their teammates and coaches come up and appreciate their effort. And here is the scorecard. Karachi Whites, Nafe would consider himself unlucky, was out or not. Saud batting through 76 of 50 was brilliant. Khurram Manzoor providing an electrifying start, 29 of 17. Shan came in 8 of 12, wasn't happy with the decision. Taha coming in, getting 9, and he was also not getting the timing out. Danish came in, scored 12 of 12, then he went, and in the end, Saad and Saqib putting on 18 and 5 respectively, getting Karachi Whites to 159 for 6. Let's head down to Kainat, who's got Khurram Manzoor with her. Well, with me is Khurram Manzoor. बहुत अच्छी partnership, electrifying game खेली है आपने. 61 for 2 आपकी टीम थी in the power play. उसके बाद थोड़ा slow down हो गया. Do you think 160 is a defendable total? नहीं है, जिस तरह मैंने और सऊद ने स्टार्ट लिया था, अनफॉर्चुनेट हमारे ऊपर से 2 आउट हो गए, शान और जिस तरह वो नाफे आउट हुए, उसके बाद एक को स्ट्राइक लेनी थी और कहीं ना कहीं कप्तान की सपोर्ट थी और उसने मुझे गो थ्रू दिया हुआ था. इकबाल भाई जो हमारे कोच है, उन्होंने बोला आपका अपना नेचुरल गेम है और हमारी तरफ से आपको लाइसेंस दिया हुआ था, इसलिए मेंटली तौर पे मेरा इंटेंट बिल्कुल क्लियर था. और T20 अब ऑल अबाउट इंटेंट है और वो इम्पैक्टफुल जो 6 ओवर में हमने तकरीबन 50-55 रन किए, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प नहीं. फिर बीच में पार्टनरशिप जिस तरह सऊद ने फिनिश किया,
तो कहीं ना कहीं डिसेंट टोटल तो है, मगर हमें अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। वेल एब्सोल्युटली पहला मैच है ये टूर्नामेंट का। टीम में आपके बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप खुद एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द टीम राइट नाउ और किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे इस टूर्नामेंट में? देखें, एज ए प्रोफेशनल आपको हर फील्ड में हर पार्ट में आपको बढ़ चढ़ के आगे से रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को, ताकि जो जूनियर आपका पिंग है वो आपको देख के मोटिवेट हो। और इससे अच्छा मैसेज नहीं है कि फ्रंट से लीड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एडिशन, मेरे ख्याल से एक एडिशन नहीं खेला मैं, सिर्फ इसीलिए कि इम्पैक्टफुल क्रिकेट है। और जो मेरे को रोल दिया मेरी मैनेजमेंट ने, जो मेरे को कप्तान ने बोला कि आप एज ए सीनियर आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मेरे को आप लाइसेंस दे के भेजें। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप सामने वाले को बैकफुट कर देते हैं या आप आउट हो जाते हैं। तो जिस तरह की पिच है, स्लो है, इम्पैक्टफुल इनिंग चाहिए थी, वो अल्लाह का शुक्र है हुई है। कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन बॉलिंग करें, अच्छी फील्डिंग करें। टोटल लग रहा है अच्छा है, मगर हमें अच्छा करना पड़ेगा। वेल आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे काउंट होता है। आपने सारे T20s पीछे खेले हैं, नेशनल T20s। व्हाट मैसेज विल यू गिव टू योर टीम? बस कोशिश यही है, वही एक्सपीरियंस अंदर कप्तान के साथ, और भी शान हो गया, हमारा सोहेल खान है, और बड़ी बैलेंस टीम बनाई है उन्होंने, सीनियर जूनियर मिक्स करके हमारे जो ऑफिशियल्स हैं। तो कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें, और एक पार्ट हो गया है, अब हमें फील्डिंग में और बॉलिंग में जान करनी पड़ेगी। दूसरी टीम ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है, 6 ओवर में 55-60 रन लगा, उसके बाद आप 150 में पकड़ लें आप, तो ये भी एक उनकी कामयाबी है। तो इस पिच को देखते हुए डिसेंट टोटल है, हमें बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। Absolutely. Thank you so much, Thank you. Khurram. And we go back to comms. I think Khurram's been playing since this city was called Lalpur. Islamabad region, they're bowling. 2 wickets each for Musa and Nasir, and a wicket each for Umair and Arslan. 159 for 6. Let's have a look at their innings, Salma. How they started off with Nafe and Captain Saud Shakeel when they won the toss. Well, early setback. Nafe given out leg before. He wasn't happy with the decision. And then came Khurram. And he started from the word go. Showed good intent. Wasn't very clean, but the intention was there. Saud, on the other hand, was classy, using his feet, creating his own space. This one was a great shot from Khurram. And then Musa came and clean bowled. Khurram had to depart. And Saud on the other side just kept going. Wickets falling, but the classy man, he knew what he had to do, being the captain of the side. Shan came in and he didn't look comfortable, didn't look fluent, and in the end was judged leg before, which he wasn't happy with too either. And then some spin and big hit from Taha, which he didn't middle and held out to long off. Saud pulling one, and this one was Danish Aziz holding out to long off again. And some fielding errors, catches dropped, and also some balls going through the fielders. This one was a big hit from Saud, and trying to go for another one, and holding out on the boundary, as this one was edged away to third. And this was the last delivery. Could have been a catch, should have been a catch, but ending up just a couple, adding to the total. In the end, 159 for Karachi Whites and 160 the target for Islamabad.
Right, we're back at the Iqbal Stadium, Faisalabad. Islamabad region need 160 runs of 20 overs at 8 runs per over. This is match number 1. Bank Alpha presents Inverix Solar Energy National T20 Cup. Well, this is what they're all playing for. All this effort, all this energy is being put just for this beautiful trophy. And of course, the pride to go with it. But what a lovely trophy this one is. All these captains will have to wait for another 2 weeks to see which captain hold onto it. At the moment, they would all want to have this one. It's such a huge opportunity for all these regions to make a mark, to step forward in their careers. All these youngsters trying their best to get to this. Right, Karachi Whites must be over the moon because they wanted 160. They've almost got there, 159, courtesy to a fantastic inning from the captain himself, Saud Shakeel. 76 runs he scored. Khurram, well, he started off beautifully with 29 of just 17, and in the end, it was the under-19 captain, Saad Beg, scoring 18 of 12 deliveries to get his team to 159 for 6 in their 20 overs. And Adintas, what about the bowling? How do you see this as? Well, Musa was quite good with the ball, taking 2 wickets, giving 43 runs. Nasser with 2 wickets as well, with 21 runs in 4 overs. Umar and Arslan were able to take 1 wicket, but when we talk about the fielding side, they disappointed. Yeah, you make a good point when you talk about fielding, because Karachi Whites is such a huge side, you just cannot give them any opportunity. Well, all is done is done. It's the second inning and the 2 openers are in. Very talented, very flamboyant openers. Left hand and right hand combination of Shamil Hussain and Ali Imran. Shamil Hussain has made his mark. He's played few good innings in his short career that we've seen him. He's coming into this cricket from Pakistan under 19. He's got his flamboyance in him. I always say he's a natural stroke maker. And this is a huge opportunity for him. It's early days, 4 games, 24 runs. This will get better. Don't worry about that. Well, absolutely. What an opportunity this is for the youngster to do the opening for its side. A lot of responsibility as the pitch has changed a little bit. It's getting slower, and as said by Khurram, it will be a good total to defend. Ali Imran, on the other hand, with 30 games, 785 runs in total, with a strike rate of 138.20. He seems quite experienced. He'll be taking on the batting side. Next up, we have Sohail Khan, the right arm fast bowler with 146, very experienced, with 181 wickets to his name. 4 4-wicket hauls and 2 5-wicket hauls for him. All right, the first delivery of the run chase. Swing early on, and you expect that from Sohail Khan. Such an experienced campaigner, as just mentioned. A 41-year-old bowling to a 20-year-old. That's the beauty of this National T20 Cup. Everybody involved, all about learning. And imagine the amount of learning Shamil Hussain will get out of this tournament, playing against people like Sohail Khan. Well, absolutely. Moving towards the PSL, a lot of experience will be gained from the National T20. Whoa, that's Sohail Khan for you. This is what he will do. Swing the air in the air. That's good. Well, Sohail Khan's not a very fast run-up. Trying to be as stable as possible. Just getting the ball on the right areas. If you look at the wrist position, absolutely brilliant. Hitting the deck. Making it look very easy. Swinging it away from Shamil. On target. This is good.
Good cricket from this pair, just realizing that there was one available, and it is very important to keep on rotating the strike, because Sohail Khan will not give you any opportunity to hit your boundaries. He's got the control, he's got the class, and he's got the experience of getting wickets. He knows how to set up a batter and get wickets. He's amongst wicket all the time. I don't I recall that tournament that he's not been in amongst the wicket or the top wicket takers. He took a fifer in the previous year, I remember. That was such a brilliant bowling performance. High. And going down to, that's Sohail Khan. What a strong action he has, making it hard for Islamabad. Well, if you see, they have quite star-studded side of Karachi. Swinging it in, missing leg. Well, he can swing the ball really well. He'll be difficult to play throughout. Maybe some improvisation might work. Use of the crease. Is it too early to talk like that? That's the question. Just 4 balls into this run chase. Yeah, you can tell that the experience that he has. He sets up the batters to get wickets. He's got this habit of taking wickets. Still remember those 5 wickets that he took last year, and that's what he did. Versus Hyderabad, always on target, hitting the stumps on regular occasion. That swing that he gets, the line, the length that he bowls at, it's just amazing. That shows that he's got that skill, the experience, and the will and the hunger to do well at this level. Always amongst wicket. Just brilliant. Look, again, hitting the target, hitting the wickets on every occasion. There's a fielder placed for that. End of the first over, it's 3 for none. Well, such a cute baby that is. I miss my girl. She's not that far, just in the room next to it. Right, Mohammad Umar, 12 wickets. Economy on just a touch higher side, 9.31. Good all-round cricketer though. Beautiful, good start. Well, Karachi, they are getting a good swing. It's maybe because of the angles they're bowling rather than the pitch. It's a new ball. They're supposed to make full use of it. Good seam position, hitting the seam on the deck. A great start by Karachi. Keeping it simple. And again, beautiful bowling. Pitching in the right area, the leaving left-hander. And as you said, it's about the control, the consistency. Keep on hitting the same area again and again. Once again, making the ball go away from the batter. An excellent seam position by both of the bowlers. A similar field positioning now as they had for Sohail Khan. There's a deep slip, we can call it, or a fielder at short third. Either of it, whatever you like it. Or a flying slip maybe. Because what he's doing is he's moving the ball away from the left-hander. Oh, that's beautiful. Twins? Certainly, maybe.
wanted to go big. Very lucky. Extremely lucky, Shamil Hussain. That's inside edge for 4. That's how he plays. Well, trying to change the approach. And he's awarded with a boundary. Inside edge, almost missing the stumps. I don't think that was a catch. Could have been a very difficult one. But the bowlers always think that it is a catch. No, you cannot think that. Oh yes, this is a catch. This one is taken. Hitting it straight back to Umar, who makes no mistake. And the first one for Karachi Whites is Shamil Hussain. Well, an easy dismissal. He was trying to do something. 2 overs, 7 runs only. He was going to do something different. And a good catch by Umar. Yeah, there is no problem. It's a good presence of mind, good catch. They're never easy, but he took it with some comfort. He was being itchy a little. Shamil Hussain was not getting those boundaries to go back after scoring 6 runs. It's 7 for 1. Still checking with the no ball. I think the landing, that's the point. Has to be fair. Yeah, it's given out. You can continue walking back. Shamil Hussain, 7 for 1. Well, first wicket for Karachi. The bowler was rewarded. As from both the ends, the bowling has been spectacular. On screen, we have Nasirullah, the new batter on crease. Right, Nasirullah Khan, right-hand batter. Couple of wickets for him also in the game. So he will be high on confidence. Lots of similarities with Sikandar Raza. He can bat too. Bowls like him. Can he bat like him? That's the question. That will do wonders for Islamabad. If he can bat like him. They do need a solid foundation here. Yes, Karachi Whites at the moment are all over them. A slip, a fly slip, fine leg, up in the circle. That's a solid start. A successful over by Mohammad Umar. 2 done, 8 for 1. Yeah, they're enjoying it. They just love it here in Faisalabad. Remember being here for Champions Cup? They came in numbers to support the local cricket. That's why we just love this venue. Just looking for 2. Is not gonna get it. Unlike Islamabad, who gave away quite few runs in the field. Well, absolutely. Truly disappointed by the fielding standard. A soft dismissal. Easy one for Arslan. Even though he was in the follow through. But the ball came very slow.
Whoa, again on the other side. He can move it everywhere. Sohail Khan, he's bowling those away swingers to the left-hander, now to the right-hander and away swinger. And the best part is the line and the length hasn't changed. Absolutely. This is what experience brings on the table. Still going strong after so many T20s. Yeah, definitely. You make a good point. That is still going big. The hunger is still there to perform. That's what we said when we talked about Khurram Manzoor when they were batting. Same is the case with Sohail Khan when they're bowling. No one has taken more wickets than him at this level. That shows the experience, the class that he has. So having two people like Khurram Manzoor and Sohail Khan in the side, that's a big side. That will be something to. They'll be very difficult to beat, I tell you. He's picked that one. That's nice. That's handsome. That's into the stands. From Ali Imran. We know that he can play. He can hit big. And he did it with some ease. Well, that was a little shorter delivery by Sohail Khan. A slight bit of mistake and the batter strikes. On the leg side, a shorter delivery made it easy for the batter to hit that one. As you were talking about Sohail, the fitness levels must be spectacular as it has been so many games. He's still bowling with the same intensity, the swing. It takes a lot. And looking for that away swing from that leg side-ish line, Sohail Khan. He knows how to set up a batter. And in doing so, you can err in your line and length sometimes. Because we've seen him take so many wickets after setting up the batters. And that the record says it all. 113 wickets in 82 matches. And with that very impressive 7.63 economy. You talk about national T20 Cups. Wahab Riaz in that list. Wonderful bowler. Anwar Ali, very exciting all-rounder. Saeed Ajmal and Imran Khan Senior. All fantastic bowlers. Edge not quite carrying. So close. Sohail Khan, 3 done, 16 for 1. Umar. Once again. That's good. They wanted to look for the second one, not to be. Al Imran, 138, his strike rate at this level. He's a clean hitter of the ball, a good all-round cricketer. You haven't seen him for a couple of years. But what happened in the last over of the last delivery of the last over? It was the setup that we've been talking about. He was bowling those leg side-ish delivery and certainly came a touch fuller on the offside, enticing the batter to go for the drive. That's Sohail Khan for you. Fielder there makes no mistake. Beautifully held. Saqib Khan the fielder. Umar gets the second one. Nasir the batter. We'll talk about the bowling partnership. Sohail Khan just making it difficult for the batter and Umar getting the wickets. And he strikes again, gets another man. That'll be a fair delivery. High arm release there is.
and Saqib takes a clean catch. They have been better on the field. Nazirullah Khan will have to go for 2 runs only. 2 for 17. Right, the skipper is in from under 19 cricket to this cricket. Rohil Nazir, he's been the captain of Pakistan under 19. Fairly experienced now, 808 runs in his 76 games. Just 150, 23 years of age. But he's got a job to do. What Saud Shakeel did for Karachi Whites as a captain, stood there till the end, almost till the end. He'll have to play the same sort of role what he did. Yeah, the point you made early on when the wicket fell about the partnerships. Sohail Khan taking 113 wickets. It make it so tough for the batters to score runs that it put them under so much pressure that the bowler bowling from the other end, he gets the reward. And that's exactly what is happening here. Sohail Khan putting the pressure from one end, looking to break through against Umar and losing the wickets. Wonder how many more wickets that he has assisted, this big man. Sohail Khan putting pressure from one end and the other bowler getting the reward. Well, it's also about the bowler from the other end gets all the experience as well, because he's bowling with Sohail Khan. He has to live up the mark as well. So he's learning and getting the wickets. As you talked about Rohil, huge responsibility. It's not only that he has to take the game till the end, also finish the game with good calculations, because it's 160. The pitch has changed a little bit. This is not going to be easy for Islamabad. And remember, it's a double-header evening. There's another game to be played after this one. So expect the pitch to get slower and slower. Bahawalpur will take on Dera Murad Jamali in the next game. That will start at 11 p.m. Right, Smart 8. Make your next smart move. Vigo Tell, they say. Smart move. Islamabad will have to be very smart in this run chase, how they go about it. Just like Vigo Tell. Oh, it was in the air for just a little while. Shan thought it has carried. Yeah, he knows it too. 4 done, 20 for 2. अभी तक हमने इस मुकाबले में 24 ओवर का खेल देखा है। कराची का पलड़ा भारी है। 2 विकेटें उन्होंने जल्दी हासिल की, शामिल और नौजवान नसीर की। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद रीजन के 2 सबसे बासलाहियत बल्लेबाजों से उनका पाला पड़ा है। अली इमरान है और रोहेल नज़ीर दानिश अजीज़ का सामना करेंगे। और स्पिन का किरदार आज की शाम बड़ा अहम है और पहली गेंद पर कर दिखाया दानिश अजीज ने। अच्छा कैच, विकेट कीपर का, गेंद टर्न हुई और रोहेल के पास उसका कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, ये एक बड़ी विकेट है। रोहेल नज़ीर जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, यहाँ पर एक शानदार गेंद
पहली बॉल अपने स्पेल की और दानिश अजीज जो है उनको स्ट्रेट अवे नए बॉल के साथ टर्न मिला और एक अच्छा कैच कीपर का। तीसरी विकेट गिरी कराची और कराची वाइट्स की टीम अब इस मैच के ऊपर इनकी गिरफ्त जो है मजबूत है कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस्लामाबाद के प्लेयर्स में। रोयल नजीर 1 रन बना के आउट हुए 20 पे 3। सरमत भट्टी बड़ी जल्दी चले आए हैं, तवक्को नहीं कर रहे थे कि पावर प्ले में उनकी बैटिंग आएगी। 3 विकेटें यहाँ पर 20 रन पर इस्लामाबाद के हाथ से निकली हैं। पुराने खिलाड़ी हैं ये, इस्लामाबाद में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं। सरमत भट्टी बाएं हाथ से खेलते हैं। 33 इनकी उम्र है, अभी अभी पास हुए हैं। 1 रन बनेगा ऑन पे खेले गैप में विद द स्पिन। एक स्लो पिच है और यहाँ पे अच्छे स्पिनर्स जो हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, उन्हें टर्न भी मिलेगा। ये देखिए नया बॉल है, 5वां ओवर है इनिंग्स का और वहां पर दानिश ने आते ही टर्न किया। दानिश कोई बड़े टर्नर नहीं है बॉल के, इसका मतलब है कि आने वाले मैचेस के अंदर स्पिनर्स को यकीनन ज्यादा मदद मिल सकती है क्योंकि ये जो पूरा स्क्वायर है ड्राई है, इसकी लुक, इसकी सरफेस ऊपर से ड्राई है। बैक टू बैक मैचेस हैं। ये शॉट अच्छा है, गैप में है, खुर्रम मंजूर इसके पीछे और 3 रन यहां पर बड़ी बाउंड्री वाली साइड पे स्ट्रोक लगा था। साकिब फील्डर हैं। अली इमरान को अब बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी और जैसे साउद शकील ने अपनी टीम के लिए एक लंबी इनिंग खेली और रन्स भी अच्छी पेस पे किए, कुछ ऐसा ही अली इमरान को भी कर दिखाना है अब। ये अली इमरान ये फास्ट बॉलर पर हमेशा मौसर रहे हैं, अच्छे पेस हिटर हैं, लेकिन यहाँ स्पिन के सामने इनको मजबूत टेक्निक की ज़रूरत होगी। और 160 जो है ये बाजार T20 में, ये आज के दिन में ये बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं इनकी टीम के, और यहाँ पर ये बाल बचे स्क्वायर स्वीप करना चाहते थे। अंपायर का ख्याल था कि गेंद टर्न हो रही है। जी हाँ, ऐसा ख्याल होना ज़रूरी है वरना ये खासा इस नज़र ऐसे आया जैसे खासा सामने लगा। जी हाँ, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। यही टर्न जो था ये जिसने बॉलर को विकेट दिलाई वही दूसरी की राह में हायल हुआ। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 25 पे 3 इस्लामाबाद। आपको खाल खाल मैदान में तमाशाइयों की भी मौजूदगी नज़र आ रही होगी। इस्लामाबाद की बैटिंग शुरू से ही वो दागदार है। 25 रन पर उनकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। साकिब खान आए हैं, अब 4 रन से बॉलिंग करेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नज़र आए थे कराची के लिए। नया इजाफा है दरअसल इनकी सफ़ों में। 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है कराची की टीम। 2 स्पिनर्स हैं। अच्छी मुतवाजन टीम है, सबसे ये तजुर्बेकार टीम है। इसमें बड़े नाम हैं, सऊद शकील,
खुर्रम, सुहेल खान टेस्ट क्रिकेटर हैं। सुहेल खान ने आज अच्छा स्पेल किया। दानिश अजीज मंझे हुए खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, सबसे बढ़कर शान मसूद। और दूसरी जानिब जो टीम है उसमें आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर जो हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आते। बिल्कुल नए नवीली सी टीम है इस्लामाबाद की। जी हाँ, कदरे कम तजर्बा है कराची की। जब आप टीम देखते हैं और आप नामों को पढ़ते हैं, खुर्रम मंजूर, साउद, शकील, शान मसूद, ख्वाजा नाफे, तो आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा नज़र आता है। सोहेल ख़ान की सूरत में दानिश अजीज़, बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। दानिश अजीज़ इस वक्त स्क्रीन पर हैं, खुश हैं। पहला ओवर, विकेट भी मिली, टर्न भी मिला। सोहेल ख़ान के बहुत ही एक समझदार फास्ट बॉलर हैं। ये गेंद अच्छा है और इस बार बड़ी अपील और जाना होगा। सरमद सोहेल ख़ान से ऊपर बैटिंग पे आए थे तो यकीनन कुछ ना कुछ बैटिंग में इनके पास होगा, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है अच्छे ऑलराउंडर की निशानियां हैं। मीडियम फास्ट बॉलिंग और एक विकेट हासिल की इन्होंने, कोई मसला नहीं फ्रंट फुट के साथ। जी हाँ, ऑन द खेलना चाहते थे जो इस पिच पर बिल्कुल आसान नहीं है। ज़्यादा देर कर दी, आसान सा कैच साद के लिए। आज की शाम का दूसरा। सरमद ने बहुत ज़्यादा जहमत नहीं दी स्कोरर्स को, उनने बनाए 4 और 27 पर 4 इस्लामाबाद। ये नए खिलाड़ी मैदान में हम्माद सिद्दीकी, इनकी आमद हुई है। दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, नौजवान हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। 50 रन की एक इनिंग्स इन्होंने खेली थी पिछले बरस कराची में इस्लामाबाद के लिए। बहुत ही मुश्किल हालात हैं जब आप नंबर 6 पर खेलते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, तो ज़्यादातर आपको आखिरी 4 से 5 ओवर्स बैटिंग को मिलते हैं, और जब ज़्यादा ओवर्स मिलते हैं तो फिर अक्सर 27 पर 4 या 25 पर 4 इस तरह के हालात होते हैं। उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। ओवर थ्रो के यहाँ पर रन जरूर मैसर आएंगे। यहाँ पर मोहम्मद ताहा, उनने डायरेक्ट थ्रो करने की कोशिश की, इस बार ओवर थ्रो नहीं हुआ। जी हाँ, बैकअप ना कर सके मिड ऑन के फील्डर और 3 रन बने ओवर थ्रो के। साकिब एक इम्प्रेसिव ऑलराउंडर लग रहे हैं। सिंपल एक्शन है और अच्छी जगह पर गेंद किया अभी तक इन्होंने। ये देखिए, ये गेंद हल्का सा बाहर निकला, अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो को बैकअप नहीं किया गया और फिर स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर को बहुत दूर जाना पड़ा। के बीचों बीच गेंदे कर रहे हैं और बैटर्स को ना वो लेंथ दे रहे हैं, ना वो वाली लाइन है जहां पर वो अपने बाजू को खोल सके, बड़ा शॉट लगा सके। हालांकि अली इमरान बड़े टैलेंटेड स्ट्रोक प्लेयर हैं। ये देखिए, वो विकेट खड़े खड़े पुश करना चाहा इस गेंद को, लेकिन अच्छा गेंद ऑफ द पिच, थोड़ा सा बाहर निकला और एक आसान कैच कीपर के लिए। इस बार फिर दिफाई अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर हुए। साकिब का बड़ा अच्छा आगाज, अपनी तीसरी गेंद पर उन्होंने विकेट उड़ाई। 30 पर 4 इस्लामाबाद पावर प्ले के बाद।
तारिक रशीद मुत्तला कर रहे हैं यहाँ सभी को कि पावर प्ले ख़त्म हो गया है। ये उसका अहवाल है। शुरू में ये कॉटन बोल्ड उमर की जानिब से ये कभी भी आसान नहीं होता फास्ट बॉलर के लिए अपनी गेंद पर कैच आउट करना। उसके बाद एक और विकेट उन्होंने हासिल की। इससे भी जाहिर हो गया था कि अब विकेट आसान नहीं है बैटिंग करने के लिए। और फिर दो के बाद दीगरे खिलाड़ी आउट हुए और प्ले के इख्तिताम की जानिब इस्लामाबाद के। आपको लगता है कराची सबसे ताकतवर टीम है सलमान इन तमाम 18 टीमों में जब आप शुरू में देखते हैं? देखिए अभी तो तमाम टीमों को देखा नहीं है, लेकिन यकीनन सियालकोट को देखे बगैर ये कह देना कि कोई और टीम सबसे मजबूत टीम है, ये मुश्किल है इस फॉर्मेट के अंदर। और अभी इसी सीज़न में वो 4 डे के चैंपियन भी बने हैं, तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स उस टीम के अंदर भी हैं। नो डाउट के कराची की टीम में इंटरनेशनल्स 4-5 हैं टॉप 6 में जो कि बहुत तजर्बा रखते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट की मुनासिबत से जो टीमों की आउटलुक है वो तो सबको देख के ही पता लगेगी। और सियालकोट एक यकीनन एक अच्छी साइड होगी। पिच जो है तारिक भाई ये खासी स्लो है, खास करके अगर हम पहले दिन के मुताबिक देखेंगे। टूर्नामेंट का पहला दिन है और उसी दिन पिच की जो रंगत है और जो उसका क्रैक साइज है वो बताता है कि काफ़ी स्लो और स्लगिश है, और इसी वजह से इस पे रन स्कोरिंग या बड़ा शॉट लगाना इतना आसान नहीं है। यार मौसम भी गर्म रहा है पिछले कुछ दिनों से फैसलाबाद में। आज गो के बादल हुए, हल्की हल्की बारिश भी हुई, लेकिन ये स्क्वायर है इससे साफ जाहिर होता है कितना ड्राई एरिया। या स्वीप शॉट जो है लगता नहीं कि इनका नेचुरल शॉट है अली का। जी हाँ, ये सामने विकेट के सामने बड़े शॉट्स लगाते हैं और वहाँ पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये देखिए स्वीप करना चाहते थे लेकिन झिझक है, इसके अंदर स्मूथनेस नहीं है। और इस बार 1 रन बनेगा। और आपने जिस स्क्वायर का जिक्र किया तो स्क्वायर देख के तो दुबई याद आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्क्वायर लगता है ये। 7 ओवर्स के खेल का इख्तिताम 33 पे 4 इस्लामाबाद। खूबसूरत शहर है फैसलाबाद, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर। क्रिकेट का ये हमेशा से ये गढ़ रहा है इस इलाके में। इकबाल स्टेडियम और 4 छिया पॉइंट के ऊपर से गेंद को चलता किया, शानदार चौका। पहली गेंद पर वार किया साकिब की अली ने। जी हाँ, ये करना होगा, कदमों का इस्तेमाल और लेंथ को चेंज करने की कोशिश, और उसमें कामयाब हुए। अच्छी टाइमिंग, पॉइंट के ऊपर से गया और बॉलर भी जोर लगा रहे हैं, और ये ज़रूर मदद करती है बैटर्स की। इस तरह के पिचेस पे जब बॉलर जोर लगाता है तो शॉट खेलने में आपको कदरे आसानी होती है। या 24 गेंदों के बाद ये चौका मिला था इस्लामाबाद को। यहाँ दूसरे के लिए भी दौड़ आए। अच्छे क्रिकेटर हैं अली इमरान जो हैं, 20 रन पर खेल रहे हैं। ओपनिंग करते हैं, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ओपनिंग करते रहे। बड़े बासलाहियत रहे हैं, नई गेंद को स्विंग करते थे। और अब से 4-5 बरस पहले ऐसा लगता था कि जल्दी जो है ये बैनुल अक़वामी क्रिकेट तक पहुंच जाएंगे, बड़ी मंजिल तक, लेकिन ये इन आउट होते रहे खुद डोमेस्टिक टीम से भी। हालांकि वो जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की पाकिस्तान को तलाश है शिद्दत के साथ, ये उस सवाल का अच्छा जवाब हो सकते थे। होम अप्लायंसेस ये बड़ा नाम है पाकिस्तान में अप्लायंसेस का।
tribute to good living. जी हाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो कि एज अ क्रिकेटर आपको बहुत पसंद आती हैं जब आप अली इमरान को देखते हैं। और जैसा आपने कहा कि वो जो टैलेंट नज़र आया था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। अच्छी गेंद, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, रूम नहीं दे रहे, तो बैटर को बनाने होंगे यहाँ पे शॉट, जैसे पहले बॉल पे बनाया था। खुद से तो वो कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे साकिब। 11 रन दिए और 1.4 ओवर्स अभी तक अपने स्पेल में कर चुके, 1 विकेट भी ली। इस्लामाबाद 40 पे 4। ये देखिए, इस लेंथ के ऊपर आपको शॉट्स को खुद बनाना पड़ेगा। एक भी बॉल अभी तक उन्होंने बैटर की जोन में नहीं किया। उम्दा शॉट, पिकअप शॉट, 4 रन के लिए। इस बार जरा सा ऑफलाइन हुए साकिब, इसलिए मुंह की खाना पड़ी। 8 पर पहुंच गए हम्माद, अच्छे टाइमर लगते हैं। जी हाँ, कमेंटेटर्स कर्स, जैसे ही हमने उनकी लाइन लेंथ की तारीफ की तो फौरन एक लूज बॉल जिसका बहुत खूबसूरती से फायदा उठाया हमाद ने, फ्लिक किया उसको स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान गैप में 4 रन के लिए। और इस बार बच गए। डायरेक्ट हिट लगती तो कोई चांस नहीं था। मोहम्मद ताहा थे फील्डर, अच्छी फील्डिंग, लेकिन डायरेक्ट हिट ना लगी जिसकी वजह से 5 विकेट बच गए इस्लामाबाद की। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 45 पे 4। Yeah, not a pretty side. Islamabad region, Ali Imran still there for 21, but rest of them, none of them rather, got themselves to the double figure as they find themselves 45 for 4. Saud Shakeel, left arm spin, realizing the surface will assist him. Ball is gripping, turning. 6 wickets for him. Director domestic and his colleagues out there enjoying that opening game here in Iqbal Stadium, Faisalabad. What an anticlimax. Top order Islamabad is totally been dismantled at the moment. 46 for 4. Still a long way to go, but you need 2 to bring the side back into the game. It's quite a star-studded side, this Karachi Whites. You can actually see on paper also, you'd probably feel it's a little lopsided. But then youngsters just feeling a bit of pressure in Islamabad. Probably as the tournament progresses, they will gain their confidence, moving through 3 different locations, Lahore, Multan and here. Yeah, certainly lack of experience showing in Islamabad side. A lot is expected though. Shamil Hussain in particular, I thought he's the one who could, if he would have stayed by now, things would have been different. But yeah, experience of Sohail Khan and Umar getting the better of them, and now they find themselves catching up. 113, still more to go on just 68 deliveries. But it's an opportunity for somebody like Hamad. We haven't seen much of him, but here's a platform set for him to showcase his talent. Ali, you played a lot of cricket.
And we'll put that question to you as the other over will start. About 4 different locations being used. 49 for 4. Yeah, the new ball has been used to the maximum. 4 wickets have fallen. 2 to Omar, 1 for Danish and Saqib. And now, a boy who's played for Karachi for a while now, different regions, zones, and appeared for Peshawar Zalmi in the HBL PSL. Arif Yaqoob, the leg spinner. I think he got 3 wickets in 1 over in the PSL. Ball very well. Good strong wrist. Yeah, coming back to 4 locations: LCC and Gaddafi Stadium in Lahore, Multan, and then Islamabad. Yeah. Not much of a difference in surfaces, but you still got to adapt to certain changes that you might feel. Here the pitch, what we've seen and what we feel, maybe Ali can tell us a little more on that. Good fielding there, but has he touched the rope while in contact with the ball? Mohammad Umar down there with that desperate dive. Probably will have a second look by Rashid Riaz. Will he go upstairs? Yeah, I think he's holding play for a moment. It's touch and go. He gets rid of that ball like an unwanted gift by his foot in contact with the rope. That's the point where he's still in contact with the ball. There. It's pretty much touch and go. Your guess is as good as mine. I think he's done really well. Certainly, saving a couple of runs. Yes, so talking about the 4 venues, take us through. How does the LCCA play? How different is it from a proper test center? Usually pitches in the test center are more reliable. You know certain characteristics that they will have, the square. Ooh, that's a good ball. He's just got his bat down at the right time. Yeah, talking about LCCA, I think it's a batter's paradise there. A little different from this surface, a bit quicker. This one on the slower side, as this one has been rushed to the batter. Yeah, that's one option, sweeping the ball and getting runs. Good fielding again. This is another difference between the two sides. The fielding. Khwaja Nafi there this time. So that's the difference, another difference in these two sides. Oh, that's a brilliant ball. I'm such a big fan of Arif Yaqoob. He puts the ball in those right areas. Halfway through, 10 overs gone. It's 54 for 4.
Halfway through, 106. Still more runs to get. 4 wickets have fallen. First one, Shamil Hussain. It's been itchy, played it straight to Umar again. Some quality bowling and some good fielding on target. Very good catching by Karachi White, showing experience. This one was a brilliant delivery from Danish Aziz in the right area. And then the length, beating on length. Very good bowling, experience showing in the Karachi White side. And some inexperience showing in the batting side of Islamabad. And that scorecard tells you that. Shalim Imran still there, 24 of 26. This is a good partnership building with Hamad, who's on 15. They needed someone up the order with Ali to go big and get some quick runs early on in the 6th over mark. But that has not happened. Now coming back to the same question about the pitches at LCCA or Gaddafi Stadium. Well, this one here is similar to Gaddafi Stadium though, on the slower side, especially with the surface which are used in domestic cricket, not the international ones, but the domestic pitches that are used on the slower side. Multan pitch, well, this is a good, that one is a good surface, good bounce, good carry on that. So batters will like Multan and LCCA. They're similar. Faisalabad and Gaddafi Stadium for domestic are similar on the slower side. So which one is the best for batting then? Has to be LCCA. And then after that? Multan pitch. The ball will come nicely onto the bat. And then the Gaddafi Stadium with 300 plus runs. That's international cricket. I'm talking about the domestic, the surface used for domestic cricket. It's on the slower side. So you're saying basically we had the worst menu. We'll get better, I say. We'll get better. Yeah, because you're saying LCC is good for batting and then Multan number 2. And I'd still go with Gaddafi as a good batting pitch because the square and its characteristics won't change from what we've seen in the Champions Trophy, 300 plus scores. This is on the slower side, yes. This one as of now, from what we've seen in pitch number 4 that is being used in this opening game. But yes, you can say a few things after watching this first game and innings and a half that the outfield is on the sluggish side. Yes, it is a little heavy. Could have been 180 if the outfield was much quicker. And he's launched that into the night sky for a maximum. He's planted that left foot to the pitch of the ball and swung his bat. 63 for 4. Yeah, clearly there's a marked difference between the two worms there. Very sluggish, the orange one, that's Islamabad. Losing 4 wickets, those 4 dots there. If you like wrist spin, watch this boy, Arif Yaqoob. He's got good control. Oh, yes! Told you watch him. Didn't read that wrong one. Straight away into that off stump. Ali Imran is a good batter. And he has deceived him. All ends out. Brilliant. Proper leg spin bowling. Setting him up in the previous over and surprised him with the wrong one this time. Yeah, there is no issue. There's no problem at this end, but it's the other end. Yep, set him up. There was no googly ball in the previous over. Not that he was expecting this one to be a leg spin, but not to be. As you said, he's a good player, but deceived by some quality bowling of Arif. They'll have to go back after scoring 26. It's 63 for 5.
Arslan Sheikh, the new batter in a lot of trouble. Islamabad 63 for 5. And some very good wrist spin bowling from Arif Yaqoob. He's got his first wicket, but the way he's bowling, the areas he's landing the ball in. It was very impressive the last time we did National T20 in Karachi. But this is another level now because he's played Pakistan Super League. So the experience also has been the part of Shaheen's side. So leg spinner, when he's confident, there's nothing like it. If he's bowling in those right areas, the right channel, with the right pace, there is no better side in cricket. He will be disappointed because he got the start. He was there for a while, but he was just foxed by some quality bowling. Good fielding. Very good fielding. Oh, look at that bite off the surface. There's bounce and there's grip. Look at the revs on the ball. Khurram Manzoor probably missed out on an opportunity here. Now too good for Arshal. Right area again. Khurram Manzoor, a few years back, he would have easily taken that one. Twelve gone, 66 for 5. सऊद शकील अच्छा स्पेल कर रहे हैं. कराची के स्पिनर्स ने पूरी तरह अपनी धाक बिठा दी है और अभी तक इस इनिंग्स को उनने एकतरफा रखा है. अली इमरान जो आगे चलकर खतरा साबित हो सकते थे वो आउट हुए. अरसल का कैच गिरा खुर्रम मंजूर के हाथों, मगर ना हालात और भी बदतर होते. स्पिन के सामने कोई जवाब नहीं था. सिर्फ एक ही मौका था इनके पास इस इनिंग्स में कि शुरू में ये जब नई गेंद थी उस पर ये सख्ती बरतते, लेकिन जब वहाँ विकेटें गिर गई तो स्पिनर्स के सामने तो ये बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पर कायनात. बिल्कुल ऐसा ही है. फास्ट बॉलर्स ने भी लेकिन बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था. सोहेल खान और अरसल. यहाँ पे रन आउट का चांस था एक और. बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पिनर्स ने बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाया है अपना. पिच ने भी खासी सपोर्ट की है स्पिनर्स को. चीकी सिंगल्स लेने की कोशिश. ये तहा जो हैं ये पॉइंट पर खड़े रहे. शुरू से एक हलचल रही है. जब जब गेंद इनके पास जाती है तो ये बड़े मुतहर्रिक हैं, इंतहाई फुर्तीले, चुस्त. तो दोनों एंड्स पर इन खबरदार रखा है. बल्लेबाजों को रन आउट के मौके पैदा किए हैं अपने लिए. अच्छे फील्डर लगे, अच्छे क्रिकेटर लग रहे हैं. हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रॉफी जीतने वाली पीटीवी की टीम में शामिल थे. 4 रन मिले, उम्दा शॉट खेला यहाँ अरसल ने. शान मसूद की कोशिश रायगा गई. 13 ओवर्स के बाद 72 पे 5.
इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा स्कोर रन करने में कामयाब नहीं रहे। स्टार्ट में जल्दी विकेट गिर गई शामिल की। अली 26 रन बनाकर वापस जाते हुए। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को नहीं मिली दो बैटर्स की तरफ से। अभी भी उसी बिल्डअप में है हम्माद और अरसल, एक अच्छी पार्टनरशिप। जी हाँ, अच्छी इनिंग खेली है अब तक हम्माद ने। एक रवानी नज़र आई है उनके खेल में। स्पिनर को अच्छा स्वीप कर लेते हैं और यहाँ मुदाखलत शुरू हुआ चाहती है अब बारिश की। इस बार मामला जो है ये संगीन लग रहा है क्योंकि अंपायर्स ने मैदान पर बुला लिया है ये जो ग्राउंड स्टाफ है इसको भी, क्योंकि दोनों तरफ से हालात जो थे ये बिगड़ रहे थे। बादल पहले तो एक दूसरे के पीछे लगे हुए थे लेकिन फिर जो ही वो आ मिले तो सूरत हाल को जल्दी भांप लिया गया। स्कोर को जल्दी ढांपना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। ये ओले गिर रहे हैं फैसलाबाद में। पहले तो हम सुनते थे कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े ये भी पहला ही मैच है, वही सूरत हाल है तकरीबन। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि बारिश हो सकती है और ओले पड़ना शुरू हो गए यहाँ पे बहुत तेजी से। ये यालाबारी हो रही। हो सकता है मैच ज़्यादा देर के लिए रुक जाए यहाँ। यहाँ फैसलाबाद जो है ये पाकिस्तान के ड्राई जोन में शुमार किया जाता है, पंजाब के ड्राई जोन्स में रादर। यहाँ इतनी बारिशें नहीं होती लेकिन आज क्रिकेट आई है, बारिश ने उसका खैर मकदम किया है। खासी घनी घनी घास है इकबाल स्टेडियम की। इस इलाके को ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा बारिश से। अंपायर खिलाड़ी को मैदान छोड़कर बड़ी जल्दी बाहर चले गए हैं। इससे पहले इस्लामाबाद रीजन के जो बल्लेबाज थे उनने भी बड़ी जल्दी हाथ खड़े किए। शामिल से बड़ी उम्मीदें थीं कि फॉर्म बल्लेबाज से 6 रन बना सके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा खेल कर आए थे प्रेसिडेंट ट्रॉफी में। अली इमरान ने काफ़ी देर तक मुज़ाहमत की, वो आरिफ के हाथों कुछ देर पहले ख़त्म हुई। नसीर रुहेल ये जल्दी गए, सरमद ने भी उनका पीछा किया। हम्माद जो हैं ये इकलौते ऐसे बैट्समैन लगे हैं जो मुकाबले पर दिखाई दिए कराची के। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची वाइट से बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है। सोहेल खान को कोई विकेट नहीं मिली लेकिन सबसे मेन अटैकिंग बॉलर इनके सोहेल रहे हैं। उमर 2 विकेट लेकर दानिश, साकिब और आरिफ ने एक एक विकेट ली है। आरिफ अभी भी बॉल कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है। आरिफ ने आते साथ एक विकेट ली। या 3 स्पिनर्स को आजमाया कराची वाइट्स ने। तमाशाई अभी भी इनको इस बारिश के खिलाफ एक उम्मीद है। दरअसल इनने बना ली हुई है ये जो हमारे बाएं जानिब जो स्टैंड है उसकी छत के निकले हुए सिरे की। और कराची वाइट्स ने आज 159 रन बनाए 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर। सऊद बाकमाल नजर आए, 50 गेंदों में 76 रन उनने बनाए एक मुश्किल हालात में। खुर्रम ने भी उम्दा इनिंग्स खेली और जवाब में इस्लामाबाद की टीम जो है पीछे रह गई है इस खेल में। अच्छा खासा 41 गेंदों में 87 रन बाकी हैं लेकिन सिर्फ 5 विकेटें। तो एक वक्फा अब आने को है जिसके बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे।
Welcome back once again to Iqbal Stadium, Faisalabad. This is a while ago when rain started pouring down, and it was heavy rain. In fact, it started off with a hailstorm and then it turned into heavy rain, and the square was completely covered and the match stopped in the second innings. Just have a quick look at the batting card where the game stopped. Islamabad region in all sorts of trouble. 73 for 5 in 13.1 overs. None of them could stand in front of that new ball. 26 for Ali Imran was the highest score, and Islamabad was nowhere close to that 160 to win that game. The bowling card for Karachi Whites, they were all on top of the opposition. 2 for Umar, 1 each for Danish Saqib and Arif Yaqoob. Eventually, just a quick look at the match summary where the toss was won by Karachi Whites and they posted 159 for 6 with Saud Shakeel, the captain, scoring 76 for 50. Islamabad 73 for 5. And that is the moment when rain came down and the play was stopped, and still heavy drizzle at the moment. So it was declared that Karachi Whites have won this match by 26 runs through DLS method. And Saud Shakeel, for his 76 of 50, won himself the Player of the Match award when the play was called off. So that wraps up the first game with a win for Karachi Whites. 26 runs was the margin through DLS. Now waiting for that next encounter right here at Iqbal Stadium, Faisalabad, and that's Bank Alpha presents Innings Solar Energy National T20 Match 2, and it is between Bahawalpur and Dera Murad Jamali. But as I said, it is still light drizzle at the moment here at Iqbal Stadium, Faisalabad, so we'll have to wait for that to stop and then the ground staff to tell us when they can get the ground ready. So till then, you hold your horses and stick around. We'll get you more updates. लाजवाब खुर्रम मंसूर ने बोल्ड शॉट खेला, लेफ्ट शॉट। सऊद शकील ने ये अपनी निस्फ सेंचुरी का मार्का मार दिया है। Oh yes, this is the catch. This one is taken. ये गेंद अच्छा है और इस बार बड़ी अपील और जाना होगा। शॉट, पिकअप शॉट, 4 रन के लिए